Hello guys, welcome back to Curiosity for another watch along and it's a time for India versus Australia. Finally, वो मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ ही मिनट हम अवे है कि कप से भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन एफसी एशियन कप एंड लाइनअप्स भी आ चुकी है दोनों ही टीम्स की, तो उसको भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। एंड किस तरह से इंडिया की यहाँ पे प्रिपरेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सनम हिशम बोल रहे हैं लेट्स गो गाइस। आई थिंक रियली रियली एक्साइटेड एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल आ चुकी है भाई, लाइनअप भी आ चुकी है। लेट्स गो भाई, मैच अहेड। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक सुपर एक्साइटेड एवरीवन। आई थिंक एक्साइटमेंट की कोई आज आई थिंक लिमिट नहीं होंगी मेरे हिसाब से। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए एंड लाइनअप भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मिनी आर्चरी बोल रहे कि मैंने पढ़ा थैंक यू फॉर ग्रेट सपोर्ट मेक ऑस्ट्रेलिया फील हेल एग्जैक्टली भाई। हेली उनको देखना चाहिए। शाम ओ हो अच्छा इसका क्या मतलब होता। मनीष शाहू भाई बोल रहे कि इंडिया 1-1 ड्रॉ। अरे भाई साहब, ये आपके अच्छा, गुरप्रीत बेके, शुभाशीष संदेश, निखिल सुरेश, मनवी छेत्री, चांगते, अपुया टांगरी। हाँ। ये भाई इसके इसके बारे में बात करते हैं। लाइनअप में शेयर करता हूँ पहले आप सबके साथ, ठीक है? 1 सेकंड, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लाइनअप में शो कर देता हूँ ताकि सभी भाई लोग को देख पाएँ। सो दिस इज़ द लाइनअप ऑफ इंडिया गाइस, एज़ यू कैन सी हियर। अ, एससी 11 बोल रहे कि 4-3-1-2। आई थिंक वो जो उसका फॉर्मेशन रहता है आप अच्छा मनीष से बोल रहे हैं भाई दीपक टांगरी। तो लाइनअप डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ऑब्वियसली भाई गुरप्रीत सिंह संधू एंड गोल एज एक्सपेक्टेड भाई उन्हीं के साथ स्टार्ट करना चाहिए था। बैकलाइन है यहाँ पे हमारी राहुल बेक्के, सुभाशिष बोस, संदेश चिंगान एंड निखिल पुजारी। सो डिफेंसिव आई थिंक जो थी वो थोड़ी-सी सोच यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आकाश मिश्रा की जगह पे सुभाशिष बोस को लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा डिफेंसिव सॉलिडारिटी आपकी ज़्यादा वहाँ पे ऐड करने की कोशिश की गई है। मिडफील्ड है आपकी यहाँ पे सुरेश वांगजाम, अपुया एंड दीपक टांगरी। तो वहाँ पे थोड़ी-सी और ज़्यादा क्या बोलते हैं कि आपको फिजिकैलिटी मिले, थोड़ा-सा और ज़्यादा डिफेंसिव आप आपको क्या बोले वो उसके चलते उन्होंने दीपक टांगरी को यहाँ पे मौका दिया है अहेड ऑफ ब्रेंडन या फिर थापा, जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा। एंड फ्रंट लाइन है यहाँ पे ललन चांगथे, सुनील छेत्री एंड मनवीर सिंह। सो चांगथे को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कराया जा रहा है, यहाँ पे अहेड ऑफ नोरेम माइस। तो आई थिंक ये कहीं न कहीं जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम थोड़े से हाइट वाले प्लेयर चाहेंगे एंड चाहेंगे कि जितना ज़्यादा फिजिकल टीम हो, वो लेके जाए। सो आई थिंक ये लाइनअप से ये तो मतलब क्या बोलते हैं प्रूव होता है कि ही हैज़ गॉन विथ हिज़ प्लान कि जहाँ पे फिजिकैलिटी ज़्यादा है। दीपक डांगरी का यहाँ पे इंक्लूज़न एक ही वजह से हुआ है। एक तो मिडफील्ड में आपको ज़्यादा सॉलिडारिटी देने के लिए एंड आपको फिजिकैलिटी देने के लिए भाई। और बंदे के पास एक हाइट एडवांटेज है, तो ये उनके फेवर में गई ये बात। मनवीर का भी आगे इसी तरह से स्टार्ट मिला है। नोरेम महेश आपको सेकंड हाफ में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देखने को मिल सकते हैं। टांगरी को तो लग ही रहा था इंटरव्यू के बाद। एग्ज़ैक्टली आई थिंक जब उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि हाइट वाले प्लेयर चाहिए मेरे को और फिजिकल प्लेयर, तो आई थिंक उस उससे पता चल गया था कि भाई मिडफील्ड में भी उसका आना बनता था। एंड थापा एंड ब्रेंडन की जगह पे आई थिंक डिफेंसिव सॉलिडिटी आपकी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बैक लाइन में भी आपने एक जो फुल बैक है वो सुभाशिष बोस लेके जा रहे हो, तो वो भी कहीं न कहीं आपको डिफेंसिवली वो हेल्प कर सकता है। एंड मिडफील्ड में भी आप तीनों ही ऐसे मिडफील्डर लेके जा रहे हो कि कहीं न कहीं वो नंबर 8, नंबर 6 की प्रोफाइल है। सो वहाँ पे भी आप क्या बोलते हैं कि कोई नंबर 10 लेके नहीं जा रहे हो। एंड फ्रंट थ्री में आप देखिए चांगते, म सुनील छेत्री एंड मनवीर। सो आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से इट्स लाइनअप की जहाँ पे आपको पता चलता है कि इंडिया माइट गो विथ द फर्स्ट हाफ विथ लिटिल बिट यू कैन से कि डिफेंसिव अप्रोच लाइक टांगरी। टांगरी की भाई ये टैक्टिकल प्लान है, अब कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है टांगरी का यहाँ पे फर्स्ट हाफ इंक्लूजन किस तरह से वो यहाँ पे डिफेंसिवली हेल्प कर पाते टीम को, वो बताएगा। हेलो सार्थक भाई। मांझापोड़ा सपोर्ट अनबिलीवेबल यार, क्या यहाँ केरला वाले सब जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। मिड 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 का एक्सप्लेनेशन यही है भाई कि आपको फर्स्ट हाफ में यहाँ पे गोल कंसीड नहीं करना है। आपके क्या बोलते हैं कि दीपक टांगरी के आने से आपके एरियल ड्यूल्स कुछ आप विन कर सकते हो। फिजिकलिटी वाइज़ इज़ बीन रियली सॉलिड। तो गेम को थोड़ा-सा ब्रेक करने के लिए आई थिंक उसको डाला गया है। उसके टैकल्स भी हमने देखे हैं, बट आई थिंक ही हैज़ टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में कोई ग कार्ड उन्होंने ले लिया, फिर हमारे लिए दिक्कत बढ़ सकती है। अप्रोच जो है आई थिंक गोस्टमिक का वो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि फर्स्ट हम डिफेंसिव जाएँगे, 0-0 स्कोर लाइन अगर रहती है फर्स्ट हाफ में, देन इंडिया उससे खुश होगी। सेकंड हाफ में कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा रिस्क लें एंड मेबी दीपक टांगरी, सुरेश वांगजाम की जगह पे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि अनिरुद्ध थापा या फिर ब्रेंडन आते हुए दिख सकते हैं। फ्रंट लाइन में भी आई थिंक नोरेम महेश सेकंड हाफ में आपको आते हुए दिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ मनवीर।
आप चाहते फिर राइट में मूव कर सकते हैं। एंड बैक लाइन आई थिंक कहीं न कहीं कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द मैच, देखेंगे उसमें कितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाइज़ यहाँ पे बचे हैं, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक द बिगेस्ट रिस्पांसिबिलिटी विल बी ऑन दी संदेश चिंगान, राहुल बेके। यहाँ पे आपके जो दोनों सेंटर बैक है वो, एंड आपका जो डिफेंसिव मिडफील्डर होने वाला है दीपक टांगरी एंड मे बी सुरेश, वो ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। एंड अपुया थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि नंबर 8 वाला रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे को तो ये दिख रहा है, लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो? ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स आर 6.6 फुट, ओह हो! बिल्कुल, बिल्कुल भाई। नहीं हारेंगे भाई, इंडिया क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? अरे भाई, वो तो भाई उससे बढ़िया तो क्या ही बात है। और टैक्टिक्स इन सिंपल, राइट विंग इज फुल अटैक, पुजारी एंड मनवीर कॉम्बो, चांगते विल इन्वर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड इज फुल डिफेंस, बोज एंड टांगरी कॉम्बो। एग्री, एग्री। आई थिंक इसीलिए मैंने बोला ना कि फर्स्ट हाफ में जो अप्रोच दिख रहा है, वो थोड़ा-सा आपको डिफेंसिव ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर्ड टू अटैकिंग। आई थिंक दोनों साइड से अटैक नहीं करने की कोशिश है यहाँ पे। कुलदीप शर्मा भाई हेलो ब्रो। सहल बेंच पे है क्या? सहल बेंच पे नहीं, आज के मैच में अवेलेबल ही नहीं है। आई थिंक बेंच पे आपके अमरिंदर सिंह है, विशाल कैथ है, लेलेनचुंगा है, लालचुंगना है, आकाश मिश्रा, अनिरुद्ध थापा, ब्रेंडन, लिस्टन, नोरेम महेश, राहुल केवी, प्रीतम कोटाल, मेहताब एंड विक्रम। सो ही इज़ नॉट ऑन द बेंच। सो वो तो एज़ एक्सपेक्टेड भाई। कॉर्नर एंड सेट पीसेस विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि जो दीपक टांगरी को ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों इंक्लूड किया गया है, उसका वन ऑफ द रीज़न वो भी है कि सेट पीसेस एंड कॉर्नर को डिफेंड करने के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाइट वाला बंदा मिल गया। मनवीर तो आपने डाला ही है। ऊपर से दीपक टांगरी है, राहुल बेके, संदेश शिकार। ये 4-5 रीज़न जो मेरे को लग रहा है, यहाँ पे उसका इंक्लूज़न किया गया है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी देखते हैं कितना वो मतलब प्लान एग्ज़ीक्यूट हो पाता है, वो एक अलग चीज़ है। अब कितना वो एग्ज़ीक्यूट हो पाता है। सहल बेंच पे नहीं है भाई। बिल्कुल। हेलो, हेलो, हेलो भाई हेलो। व्हेन डज़ स्ट्रीम स्टार्ट लाइक नेशनल एंथम एंड ऑल? आई थिंक वो 5 मिनट पहले होगा सारी चीज़ें, 10-15 मिनट में। आई थिंक 4:50 से आप देखना स्टार्ट करना। आई थिंक उस टाइम पे शायद आपका स्टार्ट हो जाएगा वो। सो ये वाली चीज़ है भाई। नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट स्टिल कांट वेट टू सी आवर बॉयज प्लेड। एग्री, एग्री। ध्रुव कुमार भाई, आपकी टीम भाई जनरली इस तरह के मैचेस काफ़ी कम खेलती है, तो डेफिनिटली इट्स अ बिग ओकेशन। फीलिंग लाइक पहले 2 मिनट पे गोल खा लेंगे। अरे भाई, स्टार्टिंग में हमें गोल नहीं खाना है भाई। आई थिंक अगर फर्स्ट हाफ में हम 0-0 तक रोकते हैं, सेकंड हाफ विल बी एनीथिंग। मतलब फिर हमारी जो उम्मीद है ना कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, वो तभी जाके ज़्यादा उम्मीद आपकी बढ़ सकती है, जब फर्स्ट हाफ आप 0-0 से निकालो। सेकंड हाफ में आप स्टार्टिंग में कंसीडर ना करो, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इंडिया जो 45 टू 60 मिनट है, वो 15 मिनट में भी यहाँ पे अनसर्ट काफ़ी ज़्यादा दिखती है, उसमें भी हमने काफ़ी सारे गोल कंसीडर किए हैं। सो उससे हमें बच के रहना है। वी हैव टू अवॉइड दैट थिंग। एंड वहाँ पे कैसे भी करके हमारी जो डिफेंसिव शेप है उसको मेंटेन करके आई थिंक हमें रखना है कि जितना गेम आप डीप लेके जाओगे 60, 70, 80, प्रेशर उतना ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर माउंट होता जाएगा। एंड उतने ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अंडर प्रेशर आप देखिए कि हर कोई प्लेयर सही तरीके से मतलब स्किल सेट होने के बावजूद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे इंडिया के लिए चांस बन सकता है कि भई आप वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं हर्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी। Deepak Tangri is a defensive midfielder, so I think it's a good choice. But Tangri is unreliable. However, we don't have any choice. Satisfied with the lineup though. I think मेरे हिसाब से अप्रोच अच्छा है. To be honest, I think जो आपका फर्स्ट हाफ में अप्रोच है, आई थिंक वो थोड़ा-सा मेरे को बेटर दिखा। जो अभी मतलब हमने बात भी की थी कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा-सा आपको डिफेंसिव जाना चाहिए, सेकंड हाफ में ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, वही दिख रहा है। Decent lineup, we can understand why Tangri is starting now. Let's back the blue, vamos India. बिल्कुल, बिल्कुल भाई। Will Apuya play as a नंबर 8 टुडे? आई थिंक थोड़ा-सा वो आगे खेलेगा कंपैरेटिव टू सुरेश एंड दीपक टांगरी। आई थिंक वो थोड़ा-सा होल्डिंग मिडफील्डर का रोल प्ले करेंगे। बाकी देखते हैं ऑन द फील्ड किस तरह से पोजीशनिंग होती है एंड विथआउट द बॉल किस तरह का शेप रहता है, वो भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। आई थिंक विथआउट द लग रहा है मेरे को कि आपका क्या बोलते हैं 4-1-4-1 हो सकता है, सो देखते हैं। मांझापड़ा बिल्कुल, बिल्कुल भाई। और टैक्टिक्स ये ले लिया था, ओके। अल्ट्रा डिफेंसिव लग रहा है, राइट फ्लैंक इम्पोर्टेंट होगा, पुजारी और चांथे को बॉल आगे ले जाना पड़ेगा। बट राइट साइड पे भाई मनवीर खेलेगा मेरे हिसाब से। तो राइट साइड पे मनवीर एंड पुजारी का जो कॉम्बिनेशन है, वो लिंकअप प्ले वो बेटर होना पड़ेगा। हेलो भाई, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट टू इंडिया। अरे मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आज पूरा एरोप्लेन पार्क करके खेलना है। ऑफ कोर्स नो नीड टू प्ले गेम, बट थापा कुड बी बेटर ऑप्शन, स्टिल लेट्स बिलीव लॉर्ड्स टीमैच। द बिगेस्ट अपसेट वाइब्स कमिंग। अरे भाई, अगर ये होता है, तो इससे तो बढ़िया बात क्या ही हो सकती है भाई।
Why who do you think will get a chance to play among Mahesh and Vikram? I think Mahesh will come in second half definitely. विक्रम का भी है, आप अब यू नेवर नो, मिल सकता है चांस उसको, बट आई थिंक महेश शॉर्ट शॉर्ट में देख रहा हूँ कि सेकंड हाफ में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सहल बेंच पे नहीं है क्योंकि उसके लिए खास ऑफर अरेंज किया है। अच्छा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वो चीज़ ठीक हो जाएगा। द लास्ट टाइम वी कंसीडर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी बिकॉज़ ऑफ हाइट डिफरेंस सिंपली डिस्पाइट सुब्रता पॉल हीरोइक भाई, वो उस मैच में भाई सुब्रता दादा का अगर क्या बोलती कि परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होता तो स्कोर लाइन विल बी इन डबल डिजिट। सिंपल एज़ दैट। जी सिनेमा, हेलो ब्रो सैम मुच्छारी भाई, हेलो हेलो। ए क्या, अरे भाई क्या बोल रहे हो? यूसीडी नी छोनो चोम्बा, अच्छा। हेलो सार्थक बूम भाई, अरे भाई आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ब्रो, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम विल वी पार्क द बस। पार्क द बस तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। टोटल मतलब क्या बोलते कि अब मेरे को नहीं लग रहा कि आप उसके लिए जा रहे हो कि पार्क द बस करोगे। आई थिंक थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है कि ऑफेंसिव जाने की कोशिश भी है राइट साइड से, एटलीस्ट वो दिख रहा है अभी से। बाकी तो देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में क्या हमारा अप्रोच रहता है, वो ज़्यादा पता चलेगा उसके बाद ही। बट लाइनअप के ऊपर से आपका क्या ख्याल है? लेट्स प्ले आराम बॉल, हाँ। भाई सुनील सर गोल मार सकते हैं क्या? बिल्कुल मार सकते हैं भाई, क्यों क्यों नहीं मार सकते? व्हाई नॉट? मार ही सकते हैं भाई। अ, 4-4-2, होप प्लेयर्स डोंट गेट देयर शोल्डर्स डाउन after conceding a goal or two. Aim should be to give our best and learn as much as we can. That's the realistic. हाँ, सौरभदीप भाई बोल रहे हैं कि नाम्बिया वर्सेस इंडिया इन क्रिकेट वाला फीलिंग आ रहा है। जस्ट दिस टाइम वी आर द अंडरडॉग्स। हाँ, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है आपकी। लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो राहुल राठौर भाई, आप भी काफ़ी दिनों बाद भाई। कांग्रेचुलेशन ऑन 10 के भाई, अभी कहाँ हुए हैं भाई, अभी तो काफ़ी लंबी मंजिल बाकी है भाई, 1200 सब्सक्राइबर हुए हैं भाई। तो जल्दी से भाई जो भी लोग जुड़ रहे हैं लाइक सब्सक्राइब ठोको भाई इसी बात पे, आज इंडिया का इतना बड़ा मैच है भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। ब्रो फुल नर्वस कांट वेट, जोशुआ कार्ल्टन भाई सेम फीलिंग भाई। ये टाइम खत्म काहे नहीं हो रहा भाई? एक-एक भाई आज तो पूरा दिन ही गुज़र नहीं रहा है भाई, जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि आपका वो सारा चला है। एक-एक मिनट भाई लग रहा है कि भाई कब खत्म होगा, वो वाली चीज़ है। एक्साइटमेंट ही अलग है भाई इसका। इस मैच का एक्साइटमेंट ही हमारे लिए अलग है। तो वो तो रहेगा भाई, ऑब्वियसली बात है। ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या उनकी लाइनअप है? अच्छा। लाइनअप डाली कि नहीं? हाँ, डाल दी है। 1 मिनट में शेयर करते हुए ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप भी देख लेते हैं। उनके लिए भी कौन-कौन से प्लेयर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट 1 सेकंड, शेयर करता हूँ मैं उनकी लाइनअप भी। तो दिस इज़ द ऑस्ट्रेलियाज़ लाइनअप गाइज़। 1 सेकंड, हाँ, ये रही। तो ये लो भाई, ये है ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप। मैट रायन की भाई वापसी, उनके कैप्टन, गोलकीपर मैथ्यू रायन, वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर, एक्सपीरियंस्ड वन। सो उनकी यहाँ पे वापसी हो चुकी है, तो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर देम इन गोलकीपिंग। गेथिन जोन्स जो उनके राइट बैक है, उनके पास भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हैरी सोतोर एंड काई रोवेल्स के साथ यहाँ पे गया है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, आई थिंक उन्होंने भी एक्सपीरियंस को चूज़ किया है ओवर यू कैन से कि यंगस्टर। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका कैमरून सर्जिस को मौका मिल सकता था, बट के रोवेल्स इज़ गोइंग अहेड। अजीज बेहिश जो कि लेफ्ट बैक खेलेंगे यहाँ पे, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो वहाँ पे भी जॉर्डन बोस को यहाँ पे सेकंड हाफ में मेबी फ्रेश लेग्स के साथ हम देखने को मिल सकता है। किनू बेकस इन मिडफील्ड, तो वहाँ पे भी भाई ओनिल आई थिंक ओनिल की जगह पे वो आए हैं। सो दैट्स आल्सो एक्सपीरियंस प्लेयर। जैक्सन इरविन तो आपके डिफेंसिव मिडफील्डर है ही है। कॉनर मैटक्लेफ वो भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है भाई। सो मिडफील्ड इंटरेस्टिंग है, कीनू बेकर्स, जैक्सन इरविन एंड कॉनर मैटक्लेफ, ये तीनों काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं। मार्टिन बोयल इन फ्रंट लाइन, मिचेल ड्यूक एंड क्रेग गुडविन। सो वहाँ पे भी भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सिल्वेरा की जगह पे आपके मार्टिन बोयल को मौका मिला है। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग लाइनअप फ्रॉम द यू कैन से ग्रेहाम आर्नोल्ड। तो वो भी थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं मैच को, रादर देन टेकिंग टू मेनी यंगस्टर इन द स्टार्टिंग 11। सेकंड हाफ में हमें यहाँ पे सिल्वेरा, जॉर्डन बोस ये सारे आपको देखने को, ओनिल वो सब देखने को मिल सकते हैं। 3 विल बी आल्सो गुड स्कोर लाइन। आज अगर इंडिया ड्रॉ करेगा तो आपके 10 के पक्के। अरे भाई साहब! व्हाई दीपक वी विल कंसीडर पेनल्टी बिकॉज़ ऑफ हिम। ये तो भाई देखिए, ये एक रिस्क है उसके साथ कि उसके जो हार्श टैकल है, मेबी आप इंडियन आईएसएल में आप बच जाते हो। लेकिन यहाँ पे भाई क्योंकि वीआर है, एवरीथिंग इज़ देयर, सो माइट वो आपको सीधा मतलब क्या बोलते हैं कि हर्टफुल हो सकते हैं, तो ही नीड्स टू बी केयरफुल।
प्रेडिक्टर 5 अच्छा सब्स्टिट्यूशन कौन हो सकते हैं 5? 5 सब्स्टिट्यूशन में मैं देख रहा हूँ, एक तो अनिरुद्ध थापा, दूसरा आपका नोरे महेश सिंह, बैक लाइन में मेबी आकाश प्रीतम आई थिंक देख रहा हूँ, देन आई थिंक फ्रंट लाइन में और कौन हो सकता है? एक आध हो सकता है। जून तक सुनील का 100 गोल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट भाई? इंडिया ड्रॉ कर सकता है क्या आज? मुश्किल तो है भाई, लेकिन कर दे तो भाई उससे बढ़िया बात नहीं होगी। मैकडी भाई बाकी काफ़ी लंबे दिनों बाद जुड़ रहे हो। इफ वी कैन ड्रॉ दिस मैच वी विल एटलीस्ट गेट अ पॉइंट। 933 हैज़ स्टिल 7 नीडेड, यस। 433 the team was entry was cool and stadium so fucking nice man, yes। ऑस्ट्रेलिया मिनिमम 3 गोल तो करेगी ही। देखते हैं भाई। इंडिया गिव्स ईज़ी पेनल्टीज़ इन इन चाइना इराक मैच, क्योंकि वो वही वही एक खतरा है भाई कि आपको आईएसएल में बच जाते हो ऐसी क्या बोलते हैं कि पेनल्टीज़ से और उन सब से। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा ही वो दिया जाएगा, कार्ड भी डायरेक्ट दिखा दिया जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग कि जिससे हमें थोड़ा-सा बच के रहना रे बाबा, वो वाली चीज़ है। भाई आकाश मिश्रा की जगह पे सुभाशिष बोस को क्यों किया? कोई इंजरी है? नहीं, नहीं इंजरी नहीं है, डिफेंसिव जाने के लिए भाई, क्योंकि आकाश मिश्रा से आप देखें तो सुभाशिष बोस डिफेंसिवली इज़ वेरी गुड। आकाश मिश्रा आपको ऑफेंसिव बॉल रन लेके आपको अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, बट थोड़ा-सा वहाँ पे स्पेसेस को कवर अप करने के लिए अ, सुभाशिष बोस को मौका मिला है। पर मुझे लग रहा है अपना 1 गोल पक्का मारेगा, बस ज़्यादा गोल ना खाए। स्टेडियम का सही लग रहा है, कुडोज़ टू कटार। अरे भाई स्टेडियम तो भाई वर्ल्ड कप का स्टेडियम है, तो उसमें तो क्या कमी होगी भाई। कम ऑन इंडिया, कम ऑन वंदे मातरम। बिल्कुल भाई फीलिंग वंदे मातरम वाली ही है। भाई डीडी स्पोर्ट पे आएगा मैच। यस क्रिंक एमपी भाई डीडी स्पोर्ट पे आएगा। जेसन किमिंग्स प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया 2-1 इंडिया वी विल मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई साहब। भाई आज ड्रॉ हो गया तो मैं गंजा हो जाऊँगा। आई एम शेयरिंग अ बेट। गंजा होने में शर्म नहीं, बस ड्रॉ हो जाए। अरे शाहिद शेख भाई, भाई साहब। ये भाई ये अलग लेवल का है भाई क्रेज़। डू देयर बैकलाइन इज़ यंग और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ गए हैं। एक भी यंगस्टर नहीं है। चारों के चारों अज़ीज़ बेइज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। गेथिन जोन्स भी एक्सपीरियंस वन है एंड आपके काई रोवेल्स एंड हैरी शोतोर। हैरी शोतोर भी पिछले 3 साल से टीम में अच्छे डेवलप हो चुके हैं। 25 ईयर ओल्ड एंड वन ऑफ देयर मेन डिफेंडर करंटली प्लेइंग फॉर द लेस्टर सिटी, जो कि इंग्लैंड की जो चैंपियनशिप है, सेकंड डिवीज़न, उसकी टॉप पे बैठी हुई क्लब है। एंड मे बी नेक्स्ट सीज़न आपको प्रीमियर लीग में भी खेलते हुए दिख जाएँगे हैरी शोतुर, क्योंकि लेस्टर सिटी नेक्स्ट सीज़न प्रमोशन भी ले लेगी। सो दैट शोज़ हिज़ क्वालिटी एंड ही हैज़ बीन एब्सोल्यूटली बीस्ट फॉर देम। सो आई थिंक काई रोवेल्स एंड हैरी शोतुर की जो जोड़ी है, वो तगड़ी जोड़ी है एंड एक्सपीरियंस के साथ ही वो गए हैं। अब आप देखिए कि एनक्रिक एमपी आप फालतू में क्यों भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो कर रहे हो? ईशान पंडिता स्कोरिंग टुडे। ईशान पंडिता भी हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द प्लेयर जो देख सकते हैं। जियो सिनेमा में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम का लाइव मैच देखूँगा। अरे भाई साहब! तो देखो भाई मज़ा आएगा। कुछ तुम्हें अलग वाइब मिलेगी। अतुल भाई बोल रहे हैं कि ईशान पंडिता नीड्स टू लूज़ वेट, ही लुक्स वेरी हेवी व्हाइल रनिंग। अच्छा। दीपक नागरी सो स्टार्टिंग बट समथिंग एक्साइटेड अबाउट दीपक। आई थिंक उतना ज़्यादा मैं तो शॉक नहीं हूँ। कल मतलब जो उन्होंने बोला उससे एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह की कुछ लाइनअप आपकी हो सकती है। भाई ब्रेंडन भी आएगा सेकंड हाफ में, यस आ सकता है। आई थिंक निखिल पुजारी साइड वुड बी अ वल्नरेबल साइड। यस थोड़ा-सा उस तरह से डिफेंसिव जाने की कोशिश की है यहाँ पे, तो देखते हैं। ओनली ब्रो चाहिए हाँ, ब्रो कमेंट्री कौन-सी लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश ऑब्वियसली यार एंड देखते हैं जियो सिनेमा में ऑप्शन आते हैं कि नहीं, बट आई थिंक वही मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही होगी। तो लेट्स सी। अ इसमें शायद बेटर कमेंट्री होगी। बट ऑस्ट्रेलिया भी एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ गया है। सो बच के जो रहना है वो आई थिंक उसके जो जैक्सन इरविन जो आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, ही इज़ अ वेरी लिथल डिफेंसिव मिडफील्डर टू बी ऑनेस्ट। आपके क्या बोलते हैं कि हैरी सोतर हो गए, मिचेल ड्यूक इज़ इन गुड फ़ॉर्म, सो वो भी उनके लिए स्ट्राइकर जिस फ़ॉर्म में है। क्रेग गुडविन के जो क्रॉसेस होते हैं भाई, एक्यूरेट क्रॉसेस होते हैं साले के, लेफ्ट साइड से बेहतरीन क्रॉस डालता है। सो उससे भी बच के रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्वाइट अ स्ट्रांग साइड जो उन्होंने यहाँ पे उतारी है। अ, इमेजिन महेश मेक अ मूव एंड सुनील स्कोर्स अ गोल। अरे भाई साहब यही तो देखना है भाई, यही तो देखना है। इफ वी क्वालीफाई विनिंग ओवर सीरिया वी विल फेस जापान, वी हैव नो एस्केप मोए मोए। कौन करेगा? ये बाहर के नाम मैं भूल गया उनका। ये इंडियन कोई नहीं है। होप सो काउंटर अटैक पे अच्छे रन बनाए फॉरवर्ड्स। काउंटर अटैक विल बी क्रूशियल फॉर अस डेफिनिटली। ट्रांजिशन में हमें थोड़ा-सा
क्या बोलते हैं कि क्विक होना पड़ेगा एंड हमारे प्लेयर को वहाँ पे बॉल लूज़ नहीं करनी है बाय द मेकिंग अ सिली मिस्टेक। सो प्री मैच शो शायद भाई नहीं होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक आ रहा है कि यहाँ जियो सिनेमा में? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा होगा। सो ये वाली चीज़ है। तेजस भाई बोल रहे हैं कि इंडिया विन द मैच टुडे। अरे भाई साहब, आपके मुँह में घी शक्कर भाई, आपके मुँह में घी शक्कर। इंडिया जीत जाए उससे बड़ी तो क्या ही बात हो सकती है, ऑब्वियसली भाई। सो ये होगा तो भाई हमारी फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट हो जाएगा भाई। थिंक मैच भाई 5 बजे स्टार्ट होगा एंड सार्थक भाई इतना बजा ज़्यादा आप वो हेलो, हेलो क्यों कर रहे हो भाई? ईशान पंडित हेलो परमेश्वर भाई कैसे हो मेरे भाई? ईशान पंडित ऑन बेंच। प्रियोशिष हल्दर भाई, ही इज़ ऑन बेंच। लाइक कर दो भाई, जो भी लोग जुड़ रहे हो यार पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो यार। दबा के ठोको लाइक एंड सब्सक्राइब। एक ही बार लिखो भाई प्रियोशिष हल्दर भाई, कितनी बार लिखोगे? बिलीव इन ब्लू, यस बिलीव इन ब्लू एग्ज़ैक्टली भाई, बिलीव इन ब्लू एंड होप सो कि भाई हमारे जो बंदे हैं वो ज़बरदस्त एक फाइट देनी है बस, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर उसमें रिज़ल्ट आ गया तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। दीपक रेली यस, दशरथ आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सब लोग सरप्राइज़ हुए स्टार्टिंग 11 देख के वो है आई थिंक दीपक टांगरी का इंक्लूज़न। बट आई थिंक इगो स्टिमिक को मतलब जिस तरह की उसकी टैक्टिक्स रहती है और आई थिंक इतने लंबे टाइम से हम देखते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक्सपेक्टेड भी था कि वो दीपक टांगरी के साथ जाएगा रादर देन अनिरुद्ध थापा और ब्रेंडन थोड़ा-सा वो मतलब फिज़िकैलिटी और उसको डालने के लिए। सीरियन फैन्स आर वेटिंग फॉर अस, देयर ओनली होप इज़ अस एंड आवर देम्स। वो तो म्यूचुअल है ना वो सामने-सामने। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बोल रहे हैं कि भाई हरी भाई 1% चांस 90% फेथ, जय हिंद। बिल्कुल भाई जय हिंद, लेट्स गो। Thiago Falco as the highest CV in ISL would be the biggest name। अरे भाई उसके बाद में बात कर लेंगे भाई विनीत भाई, उसके वो तो करते ही रहते हैं। वी नीड स्टेडियम फुल ब्लू एंड सिंग वंदे मातरम प्लेयर्स ऑन फुल पावर। ये अलग ही वाइब आने वाली है भाई वो तो भाई जब से वो स्टार्ट होगा। आई होप दीपक टांगरी ड्यूक को कच्चा चबा जाएगा। ईज़ी नहीं रहने वाला भाई, ईज़ी नहीं रहने वाला। कच्चा चबा जाना इतना ईज़ी तो नहीं है भाई, इतना ईज़ी नहीं है। 1 सेकंड। प्लेइंग 11 भाई अभी दिखा देते हैं दीपक टांगरी इंडिया की फिर से दिखा देते हैं भाई प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया की तो हमने दिखाई दी। इंडिया की फिर से दिखा देते हैं। 1 सेकंड मैं शेयर करता हूँ। दोनों की वैसे शेयर कर देते हैं सामने ही, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 सेकंड मैं दोनों की लाइनअप सामने रख देता हूँ, ताकि आपको भी ईज़ी हो जाए भाई। अच्छा, दोनों की नहीं है ये, इंडिया की रख देते तो। हाँ, ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट 1 सेकंड। जो भी लोग जुड़ रहे हो यार लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको यार, क्या कर रहे हो भाई? इतना तो बनता है यार। सो ये रही भाई, इंडिया की लाइनअप ये रही भाई। ये बेटर है 4-3-3, 4-2-3 जो भी आप बोलो। दीपक टांगरी, अपूया एंड सुरेश वंगजाम की मिड, सुनील छेत्री, लेलेमजोला, चांगते एंड मनवीर सिंह इन द फ्रंट लाइन एंड बैक लाइन है आपकी सुभाशिष बोस, संदेश चिंगान, राहुल बेके, निखिल पुजारी एंड गुरप्रीत सिंह संधू। सो दिस इज़ द लाइनअप। ओली होगबेन एंड पॉल मार्शफील्ड यस मोए मोए भाई। बिल्कुल लाइनअप देख के दिल टूट गया इंडिया का। अरे भाई क्या हो गया? ऐसा ऐसा क्या हो गया भाई? How come Oshie becomes so tall and not us? It's genetics. Irvin is a very experienced player in their squad. Very, very experienced. Irvin, Aziz Behich, फिर आपका मैथ्यू रायन, क्रेग गुडविन, ये सारे भाई उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। दीपक टांगरी को रखा ही लफड़ा करने के लिए है। हाँ, वो उसको उसी लिए भाई उसको गेम को चलाने के लिए नहीं रखा गया है। उसको भाई वही काम करना है कि गेम को भाई आपको बार-बार वो करना क्या बोलते हैं कि ब्रेक करना है। बट एक चीज़ जो उसको ध्यान रखनी है वो वही है कि भाई कार्ड नहीं खाना है। स्टार्टिंग में कार्ड नहीं खाना है। अदरवाइज़ भाई आप अब जो भी आप गेम प्लान लेके आए हो, वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको गेम को वही करना है, ब्रेक नहीं करना है। उसको वो नहीं करना है कि भाई तुम हमको बॉल चला के दो। उसको भाई ऑस्ट्रेलिया से जितना ज़्यादा हो सके, वो वही करना है। हाउ कम ऑस्ट्रेलिया बिकम सो अच्छा ये ले लिया था ब्रो। आप ही क्या वो एस्ट्रोलॉजर हो? 5-0 माय प्रेडिक्शन। अच्छा सोनिया जी लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो भाई। ब्रो देयर गोलकीपर प्लेस फॉर ए डिवीजन दैट्स अ सो गुड लीग। अरे भाई उनके सिर्फ गोलकीपर नहीं, ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग इन यूरोपियन लीग्स भाई।
हेलो हेलो कैसे हो आर्यन भाई? तना ना ना टांगरी डिसरप्टर एंड ऑन एंड ऑफ द बॉल। यस, वो डिसरप्टर का रोल उनके उनको दिया गया है भाई। एंड बंदे के पास फिजिकलिटी भी है, लेकिन आईएसएल में जिस तरह से वो टू लेग टैकल मारता है ना, वहां पे कार्ड नहीं मिलता। इधर ऐसा एक भी टैकल हुआ, सीधा आपको येलो कार्ड मिल जाएगा। सो वो एक बच के रहना है उसको। India got to be very careful in starting minutes. That's where India concedes the most. They got to be switch go with the whistle. होप वी विल डू बेटर। यस भाई, स्पोर्ट 18 में भी क्रिकेट का एड्स आ रहा है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के भी। चलो बढ़िया है भाई। टीम एक अच्छा सरप्राइज देता है, बिल्कुल भाई, ऑलवेज ऑलवेज। प्रोफेसर और कलिंगा को बुलाएंगे भाई। इंडिया विल हैव टू प्ले फ्रॉम देयर हार्ट। ऑब्वियसली भाई, बेंच ऑफ भाई, बिल्कुल। माय फाइनल प्रेडिक्शन इज 1-1, बिलीव और नॉट। हाँ भाई गाइस, फाइनल प्रेडिक्शन देने का भी टाइम आ चुका है। आप फाइनल प्रेडिक्शन भी अपना दे सकते हो भाई। सेपरेटर भाई बोल रहे कि भाई टीम अगर आगे अब कोई टांगरी के बारे में बोला सेंस नहीं बनाता, पॉजिटिव रहो। नहीं, हर कोई का अपना ओपिनियन है, ठीक है भाई। यहाँ पे वीआरपी है। हाँ, 3 गोल मिनिमम तो मारेगी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, दीपक टांगरी विल प्ले फॉर फिजिकल प्रेजेंस। एग्ज़ैक्टली भाई। टांगरी विल ब्रिंग लक। लक तो अरे भाई, माय आइडिया लेट ऑल प्लेयर्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पोस्ट, मेक इट 11-0 फॉर्मेशन एंड ट्राई टू अंडर सेंटर बैक हैरी शोतर हैव प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। यस, लेस्टर सिटी भाई। स्पोर्ट 18 1 पे आएगा क्या? एक किस चैनल पे आ रहा है पता नहीं मेरे को। आई थिंक शायद 1 टू 3 में से किसी एक में आ रहा होगा। 0-0 प्रेडिक्शन। अच्छा, इंडिया विन। बी पॉजिटिव गाइस एंड हिट द लाइक बटन। एग्जैक्टली भाई। जो भी लोग जुड़ रहे हो यार भाई, पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों दबा दीजिए। एंड बार-बार अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो ऑब्वियसली भाई आते ही लाइक कर दीजिए। कॉमेंट्री टीम बकवास थी कल। अच्छा, आज देखते हैं भाई। मैच रात को होना था। अच्छा, या वहाँ पे तो रात ही हो जाए, क्या बोलते हैं कि वही होगा। माय फाइनल प्रेडिक्शन 0-1 बस अपने साइड ही आ जाएगा। वहाँ पे अभी तो थोड़ा-सा अर्ली होगा हमारे से। आई थिंक डेढ़ घंटे वो क्या बोलते हैं कि वो पीछे है। सो आई थिंक मेबी वहाँ पे 4 बजेंगे। आज अगर इंडिया जीत गया तो हम इंडियंस को इतना खुशी मिलेगा कि दूसरे टीम्स को एशिया कप जीतने पर भी वही उतनी खुशी नहीं होगी। सही बात है भाई। वेदांत भाई बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के पहले मैं मनवीर को भी क्रिटिसाइज़ किया था, अब टांगरी के बारे में बोल रहे हैं। बट आई थिंक टांगरी अपने परफॉर्मेंस से प्रूव कर सकता है भाई कि भाई उसका स्टार्ट करना था और इगोस्टमी की जो टैक्टिक्स थी, वो सही थी। ये तो देखिए दोनों साइड हो सकता है। उसको क्रिटिसाइज़ इसीलिए किया जा रहा है कि उसका उतना ज़्यादा अभी तक वो उस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं है। बट ही कैन प्रूव ऑल ऑफ द जो उसके क्रिटिसाइज़र्स हैं उसको रॉन्ग भाई। दिल धक-धक और मेरा भी हो रहा है भाई। My heartbeat is going high भाई। I think 100। हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं भाई। सॉरी गाइज़, वो पावर कट ऑफ हो गया था। सॉरी फॉर दैट। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो राहुल, कैसे हो मेरे भाई? Hello, hello, Hiren. Oh, that's the feeling. अरे भाई साहब, मेरी तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि हार्ट बीट बढ़ चुकी है। व्हाट्स योर फीलिंग राइट नाउ? Same. I don't know, a lot of nervousness, but excitement. It's a mix of both. I'm seeing a lot of different. Actually, I was what I was doing in the last 1 hour was
seeing all the content creators, what they're doing, what they're saying, and yeah, nice. I actually have a friend from Bangalore, a couple of content creators who've gone to Doha, who've gone to Okay. Qatar to watch the match today, and they met Thogden there. So I was watching that also. It was really nice. So yeah, I was just व्हाट्स watching योर a lot थॉट of अबाउट content. द तो स्टार्टिंग 11 के बारे में क्या कहना है? Interesting. Interesting that he's gone Deepak Tangri. I would have not gone Deepak Tangri, but it's okay. Now you have to back the coach. It's at that point where you just have to back every decision. That's the only one. But other than that, I'm fine with the team. What about you? आई थिंक मेरे को तो मतलब वो आई एम आल्सो क्वाइट फाइन विद द स्टार्टिंग 11 बिकॉज़ मेरे को लग Yeah. रहा है कि थोड़ा-सा डिफेंसिव जाने की कोशिश की गई है फर्स्ट हाफ में। वो आई थिंक जो हम बात भी कर रहे थे अप्रोच भी वही होना चाहिए कि स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ Yeah. में आप कम रिस्क लो एंड कोशिश करो कि आप गोल कंसीड ना करो फर्स्ट हाफ में एंड सेकंड हाफ में फिर थोड़ा-सा ऑफेंसिवली ऑफेंसिव प्लेयर ऐड करके आप अटैक कर सकते हो। तो आई थिंक वही प्लान दिख रहा है। बैकलाइन में भी सुभाशिष बोस का स्टार्ट करना, मिडफील्ड में भी दीपक हाँ. टांगरी का खेलना और नंबर 10 आपका कोई नहीं है बेसिकली। सो आई थिंक वो क्लियरली इंडिकेशन है कि थोड़ा-सा वो अप्रोच दिख रहा है। डीडी स्पोर्ट के ऊपर आएगा भाई वेलकम राहुल भाई बोल रहे हैं अच्छा। मैं बोलूँगा कि अभी से कोई भी मत क्रिटिसाइज़ करो लाइनअप को भी लेट्स सी कि प्लेयर्स कैसा खेलते हैं। एग्ज़ैक्टली आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि भई जो प्लान इगोस्टोमिक लेके आए हैं और जिन प्लेयरों के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया है, क्या उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वो क्या बोलते हैं कि देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अ भाई स्पोर्ट एचडी1 में टेलीकास्ट होगा। अच्छा, जय श्री राम भाई। टांगरी वेंगर फ्रॉम 30 यार्ड्स हू सेज नो। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ मोमेंट्स व्हाट्स योर मतलब बेसिकली क्या मतलब अपना दिल क्या कह रहा है कि क्या होगा मैच में? क्या लग रहा है तुमको? क्योंकि आई थिंक We सभी spoke. फैंस We spoke two. नहीं नहीं, we spoke 2 days back because दिल हमेशा कहता है कि we're going to do something crazy, something spectacular. But I mean, yeah, let's hope. It's just back the team now. That's all. अ, मोहम्मद सिंह बोल रहे हैं कि 0-0 अरे भाई ड्रॉ भी हो जाए तो हमारे लिए तो जीत ही है। क्या बोलते हो राव? Nil all draw. I'm going to run around in the streets for sure if that happens. Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल भाई, मैं और राहुल भाई एकदम बढ़िया है भाई। इंडिया अच्छा खेलेगी बट 2-0 से हार जाएगा। अरे यार! अ, रचित बाफना भाई राहुल की हिंदी हिंदी नहीं आती भाई उसको, दैट इज़ द इश्यू। प्रेरणा सिंह बोल रहे हैं कि स्पोर्ट 18 3 और डीडी स्पोर्ट पर आ रहा है। एग्ज़ैक्टली स्पोर्ट 18 3 पे और डीडी स्पोर्ट पे आएगा और जियो सिनेमा ओटीटी के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ स्पोर्ट 18 व अच्छा। Add Messi and Van Dijk, Virgil van Dijk to this India and India within the Asian Cup. अरे मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? फ्रंट लाइन में चांगते हुए तो लेफ्ट पे स्टार्ट करा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डिसीजन? It's म्यूट पे हो राहुल। interesting actually to see Chankte start on the. I would have actually gone Mahesh. I think even you said the same thing. You would have gone Mahesh over Chankte. I would have gone Mahesh over Chankte as well because of his recent form. But it's हुँ, हुँ, okay. Again, Chankte still very good. So I'm happy with that. That's not an issue at all. Chankte can play on the left. We've seen it. So हुँ, no हुँ। issue. नहीं, नहीं ऑब्वियसली ऑब्वियसली लेकिन कुवैत के सामने भी जो गोल प्रोवाइड किया था, उसमें उसने लेफ्ट साइड से वो ब्यूटीफुल क्रॉस उसने डाला था। दूसरा एक एक आई थिंक Yeah. एरिया है कि जिसके बारे में मतलब बात हमने पहले काफ़ी टाइम की थी, वो थी सेंटर बैक पेयर एंड राहुल बेके एंड संदेश सिंघान की सेंटर बैक पेयर हमें देखने को मिल रही है। जो वर्ल्ड कप Yeah. क्वालिफायर्स में भी देखने को मिली थी। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मतलब दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है। आर यू हैप्पी किस तरह से राहुल बेके के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी रहने वाली है? क्योंकि आई थिंक सेंटर बैक पेयर सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेगी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रॉ हो जाए और कुछ भी हो। Yeah, I've seen Raul Beke for a while at BFC, so I always found him one of the more reliable players when even that spell. So I like Raul Beke, and yeah, let's again, it's he's played, he did that in the last game, so it's fine. Let's go Raul Beke. And Sandesh Shingan is obviously again experienced. You just need your experienced players to step up. It's a fairly sort of inexperienced Australian team, in a way. Other than the main guys, Jackson Irvine, um, Harry Suter, Matt Ryan, and all these guys, they also are under transition. So yeah, we should have more experience on the day. बट बट आज आज उसने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही गए हैं, वो भी स्टार्टिंग 11 में। Exactly. उन्होंने भी यंगस्टर को यहाँ पे सैमुअल सिल्वेरा को फ्रंट में नहीं खिलाया, बैक लाइन में जॉर्डन बोस को नहीं खिलाया है, That's true. मिडफील्ड में
ओनिल को नहीं खिलाया है। सो आई थिंक एडियन ओनिल, आई थिंक ये तीनों मतलब यंगस्टर थे और तीनों को जिन्होंने बायरन के सामने स्टार्ट किया था, उनकी जगह पे यंगस्टर क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर को ही चूज़ किया है यहाँ पे ग्राहम आर्नोल्ड ने। तो वो भी आई Yeah. डोंट थिंक सो कि रिस्क लेना चाहता है कि भाई इंडिया कुछ भी यहाँ पे अपसेट करे। Yeah, absolutely. Mitchell Duke, I think, starts up top for them as well. हुँ, So हुँ। yeah, let's. It's going to be tough for both the centre backs, but they'll have to sort of. I mean, set pieces again. Concede less set pieces. They've got height. They've got power. Let's see. आई थिंक सेट Hopefully, we पीसेस don't विल do बी the द की। physical match. Yeah, yeah, exactly. से सेट पीसेस ही की रहने वाली है, कि किस तरह से हम वहाँ पे डिफेंड Yeah. करते हैं, पर्टिकुलरली डिफेंस कैसा करते हैं, वो आई थिंक क्रूशियल रहेगा आपका। क्या लग रहा है कि कौन गोल मार सकता है इंडिया की ओर से? अगर मारेगा तो इंडिया या के फिर लिए ल ल इंडिया के लिए लग रहा है तुमको कि मारेगा कोई इंडिया की ओर से गोल आएगा? weirdly है. I mean, वो फीलिंग है कि इंडिया कैन स्कोर एंड आई एम होपिंग इट कम्स फ्रॉम सुनील छेत्री. हुँ, Let's give him a good send off. हुँ। If he can score in this Asian Cup. Yeah. आई थिंक वो सेलिब्रेशन मोमेंट कैसा होगा सुनील छेत्री का भाई, इतना मतलब ज़बरदस्त। अरे स्टेडियम भी आपने कल देखा भाई, लोहल स्टेडियम वो कतार वर्सेस लेबनान वाला भी क्या एटमॉस्फियर था। आज भी आई थिंक yeah, yeah, छोटा स्टेडियम है उससे, लेकिन आई थिंक एटमॉस्फियर विल बी क्रेज़ी एंड उसके सामने भाई yeah. सुनील छेत्री का वो सेलिब्रेशन होगा ज़बरदस्त, मज़ा ही आ जाए। So I remember Sunil Chetri. He did an interview and people were asking कि आप celebrate क्यों नहीं करते goals, and he said I only हुँ, celebrate the important goals, and when I actually feel like celebrating, he'll celebrate. So if he scores today, he's definitely going to celebrate. You can be हुँ। yeah, assured of that. वो True. तो आइकॉनिक मोमेंट हो जाएगा आई थिंक पूरे मतलब मज़ा ही आ जाना है अगर हो पाए तो। टांगरिस बेंगर इज़ कमिंग। हुँ। देखिए टांगरी आपको सेट पीसेस में भी मतलब आप जब कॉर्नर आपको मिलेगा, उसमें भी उसका भाई हेडर और वो सब उसकी काफ़ी ज़्यादा वो है आई थिंक यूज़फुल हो सकता है। सो लेट होप सो। भाई डी डे आ गया बिल्कुल मयंक भाई, डी डे नहीं भाई, 15 मिनट भी नहीं बचे, 12 मिनट बचे हैं मैच के। एंड राहुल मेरे यहाँ पे पावर कट ऑफ हो गया है, सो पता नहीं मेरा लैपटॉप का बैटरी कितना चलेगा। सो अगर मैं ऑफ हो जाऊँ तो तुम थोड़ा-सा स्ट्रीम कंटिन्यू करना। मैं अभी Done, 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 ठीक है? बॉडीज़ ऑन द done, done, लाइन done. होगी। आई थिंक ये एक क्रूशियल रहेगा आपको, तुमको नहीं लगता कि पूरा 90 मिनट जो इंटेंसिटी है, वो मतलब उस इंटेंसिटी के साथ खेलना? True. इसीलिए I think Suresh and Tangri going to be very important because they have that energy and they'll give you those legs. कि वो हुँ, midfield में they'll give you 100% and they'll run completely. हुँ। आई थिंक But yeah, फिज़िकैलिटी वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हम टेस्टेड होने वाले हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा yeah, हमारे प्लेयर को भागना भी पड़ेगा। इसीलिए कल इगो स्टेमिक ने भी बोला था कि मेरे को ऐसे प्लेयर चाहिए कल की जो भाग सके एंड जो yeah, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो एंड जिसके पास हाइट हो। क्योंकि ऐसे प्लेयरों की ज़्यादा ज़रूरत exactly. पड़ने वाली है रादर देन स्किल सेट वाला कि भई एकदम आपको प्रॉपर स्किल सेट, क्योंकि आई थिंक आपको डिस्रप्टर ही चाहिए। दीपक टांगरी को आई थिंक लाना का वन ऑफ द रीज़न भी वही है। Yeah, yeah. And looks like Apuya will play that little more advanced role. Maybe. I हुँ। still don't know how they'll set up in midfield, but yeah. What do you think, Hiren? How are they going to set up in midfield? Who do you think is going to be the most advanced? It's very tough आई to आई call. आई I still. हाँ, आई थिंक मेरे को भी लगता है अपूया अपूया को ही वो रोल दिया जाएगा, जो थोड़ा-सा बॉक्स टू बॉक्स खेलेगा। आई थिंक सुरेश एंड टांगरी थोड़ा-सा वो क्या बोलते हैं कि होल्ड अप करके खेलेंगे। मेरे को ये लग रहा है कि मेबी अपूया एंड दीपक टांगरी भी खेल सकते हैं। एंड सूरज को थोड़ा-सा एडवांस रोल दिया जाए। लेट्स सी ऑन द पिच किस तरह से वो रहता है। एंड पेनल्टी भाई ये एक एक सबसे बड़ा एक ये है भाई, पेनल्टी आज कंसीडर नहीं करनी है 100% भाई, आपकी डिफेंसिव जो ऑर्गनाइजेशन है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहनी पड़ेगी। 80-20 पोज़ीशन। आप म्यूट पे हो राहुल, म्यूट पे। I completely agree with you, and I'm worried only for Nikhil Pujari. Please, let's not concede any stupid penalties or free kicks around the box. No rash challenges. Yeah, play with intensity, but please somehow just keep things together at the back. यस, यस भाई, स्पॉटेड इन 3 पे आ रहा है भाई, चेक करो। ब्रेंडन इन सेकंड हाफ। सब्स्टिट्यूशन में आप सेकंड हाफ में किस-किस को देख रहे हो? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Mahesh for sure. I think Mahesh can bring some brilliant impact into this game if comes on. Weirdly, again for the legs, I wouldn't mind seeing somebody like Rahul KP just for around for 10 minutes. Just give you that burst of energy, and you never know if the game is nil all. I wouldn't mind Rahul KP at all.
And yeah, you've got experience again on the bench. You've got Preetham Kotal if you need it. You've got Anirudh Thapa for legs in midfield if you need it. So we've got options off the bench, so it's good. थापा, Mahesh for ब्रेंडन, sure. निखिल, Mahesh महेश, for ईशा। sure. महेश तो आएगा ही आएगा। लिस्टन भी आ Absolutely. सकता है विशाल भाई, एग्री, एग्री, Yeah. लिस्टन भी आपका आ सकता है। ही कैन आल्सो बी। शायद चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि व्हाट नेट दिस एरिया पर्सन यूज्ड ऑलवेज लैगिंग इन लाइव स्ट्रीम आई हैव सीन। अरे भाई। अ, ठीक है। The only way India is gonna score is an counter which they have to be with very clinical and fast to Sunil and Nishan has the biggest chance to score goal। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल भाई। चालू हो गया। Oh, अच्छा क्या वो स्टार्ट हो गया क्या? अ, have to राहुल turn it तुम on. थोड़ा-सा कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा-सा ये वो देख लेता हूँ कि पावर आने वाला है कि नहीं, ठीक है? पा Yeah, 5 yeah, मिनट yeah. के लिए। Sure, sure. मैं बैक Yeah, Vinny saying the only way India is going to score is on counters. I think you're 100%. India has to be clinical on counters, and if we can somehow create one or two chances on the break, we can score a goal. Shaq saying one nil or 2-0 loss still an achievement. Absolutely, yeah. Even if we do lose, I think the performance is what will count, and I agree, Shaq. Hopefully, India can sort of keep, even if we do lose, keep the score to a minimum because of course third place. Any team that finishes third cannot score. Yep. In what 7 minutes left, guys? India hasn't done well or won a match in this new blue Performex kit. Parmeshwar is saying hopefully that changes today, and there's a lot of excitement. I for one am very excited. Let's go, Vamos, India. Yeah, come on, boys. Let's hopefully we can do it. Also remember that we go to playoffs with 3 points. Also, if we can beat Syria, says Shag. Phew. It's getting interesting. I saw a couple of videos as well. India outside the stadium. There look like there are quite a few fans. If anybody is watching, anybody can see the number of fans. Please let drop it in the chat. Tell us how many sort of Indian fans you can see. Is the crowd good? What's the atmosphere like? Because I'm still running on the live stream. Everyone, guys, Hiren also will be back. He's just having a slight power cut issue at his place, so he should be back soon. Until then, I will sort of keep this going. 6 minutes to kick off, guys. 6 minutes to kick off. First game for India in the AFC Cup this year. Hopefully, we can start off our campaign very well. Apparently, 45K capacity all sold out, and majority will be Indian fans, is what Shaq is saying. That's great to hear. That's great to know that we will at least have the support. It's such a psychological, factor to have fans and support in the ground because the more fans you have, it's something that I played a bit of football, and when you have people cheering on for you, it really gives you more energy, and I think this Indian team will need it, especially because we're missing some key players. We're missing no Sahal today, no Anwar Ali, of course, Jackson, and yeah, for sure, it's great to know that we have the backing of the fans at least going into this match. Okay, just getting my live stream going as well. I think the Australian national anthem is playing. Hopefully, I'm not too behind, guys. Can you? Yeah. Shaq also saying national anthem has started. The Australian national anthem is what I can see right now. Hopefully, we are not lagging behind or anything like that, and we're on pace with everyone else. Anybody watching on television in the stream, please let us know if you're ahead or something like that, because usually on TV it's a little faster, and on JioCinema it might be a little slower, a few minutes slower. Hiren's back. Hi, Hiren. Or not quite, not quite.
So yeah, guys, just again, couple of updates. Graham Arnold, Jackson Irvine did their sort of pre-match press conferences saying that they will not be they'll not be taking sort of India lightly or anything like that. It's they're going to play to their strengths and focus on themselves, and they're aware of a couple of Indian players who are quite technical, and I hope players like that, Apuya, who are technically good, can get on the ball and sort of get things under control in midfield for India. Yeah, Indian national anthem started. Looks like, yeah. Lots of Indian fans. Yeah, now getting the visuals from the stadium. There are lots of Indian fans in the ground. राहुल, मैच आपको जियो सिनेमा पर यू कैन स्ट्रीम इट, और आप स्पोर्ट्स 18 पर भी देख सकते हैं. सो यू गॉट अ कपल ऑफ ऑप्शंस, बट या जियो. Yep, national anthem's done. Looks like we're all ready for action. Toss and then kick off. That's all that's left now. हेलो राहुल, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो. All right, the team is just getting their photos clicked, team pictures before the start of the game. As we see most times, this happens in most games, and yeah, few Australian fans as well in the stands, but it does look like there are majority Indian fans, which is again great for us. Absolutely, Rahul. वही hope है कि team sort of 100% देगी आज, and we can come away with a brilliant result. Yeah, Matt Ryan and Sunil Chetri, the two captains, getting ready for the toss. Yeah, Matt Ryan has got his face mask on because he was suspected with injury, and he wasn't sure that we weren't sure that if he'd make it. But Graham Arnold confirmed that he was 100% fit for this match. So Matt Ryan is there in goal for Australia. They're probably their most experienced player. He's played in the Premier League, played for Arsenal. So yeah, he's done it all, and he's the captain. Yep, Chetri and Matt Ryan, probably the two most experienced players today. मैथ्यू रायन Yeah. आर्सेनल में भी खेला हुआ है ना? Hiren, audio is not clear. आवाज ओके, एक मिनट. Yeah, all good, all good. हेलो. Yeah, all good, Hiren. Can hear you. अब आ रही है आवाज सही मेरी? आ रहे. चलो भाई. हाँ, एवरीथिंग अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड आई थिंक किक ऑफ भी होने वाला है. सो Yep. 5 बढ़ चुके हैं, एंड लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो. Come on, yeah, come on, India. कम ऑन. ऐसे ऐसे स्टेडियम में इंडियन टीम को देखते हुए मतलब अलग ही वाइब आती है. योशिमी Exactly. यामाशिता, जापानीज रेफरी, मेकिंग a history in AFC Asian Cup, first woman referee to start the officiate the game in the AFC Asian Cup's history. So that's the one of the interesting you can say key effects. Also, not only Yoshimi Yamashita, Mozono Bokono and Neromi Toshiromi, both the assistant referees are also a women's referee. So this trio has officiated the match today. So he has blow the whistle and match has started. मैच स्टार्ट हो चुका है भाई. अनुराग कौशिक भाई, मौलिक नैयर भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ब्रो भाई. ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अटैक करती हुई 4-3-3 ऑन पेपर कैन चेंज 4-5-1 इफ रिक्वायर्ड, फ्लेक्सिबल, लेट्स गो. यस, लेट्स सी यहाँ पे Come on. विदाउट द बॉल. यस, आई थिंक विदाउट द बॉल 4-1 दिख रहा है मेरे को. व्हाट डू यू से? Too early. I think just want to wait and see how this game progresses. We'll wait for a couple of minutes and see how things go, and sort of break that down. But it looks good. Okay, Gurpreet on the ball early. This is nice for India because नाइस.
the feel of the ball. बढ़िया 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 भाई. प्रेशर आई थिंक स्टार्टिंग से अगर हमारी क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी हो रही एंड इंडिया आई थिंक जनरली हाई इंटेंसिटी के साथ ही स्टार्ट करता है. फर्स्ट 15-20 Yeah. मिनट वी आर रियली ऑन द गो कि भाई वहाँ पे उनको बिल्कुल थोड़े से अनसेटल हो, वहीं पे उनको थोड़ा सा हर्ट हो जाए तो उससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती. सो इंडिया Australia on the ball. यूजुअली Hiren, interesting that India is sort of sitting back, not pressing right now. Interesting that we're letting them have the ball. आई थिंक सुरेश थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो रोल प्ले कर रहे हैं मेरे हिसाब से. नंबर 8 वाला हाँ, आप देखिए yeah, अपुया एंड दीपक टांगरी दोनों होल्डिंग मिडफील्डर का रोल प्ले कर रहे हैं. yep. Looks like मनवीर it. भी थोड़ा सा डीप ही है. मनवीर भी थोड़ा सा विंग बैक Oh, की तरह खेल रहा है. lovely turn, Ray Suresh. Won a foul. Nice that we won the first foul of the game. यस गुड. Yeah, that's huge psychological boost. बेकस भी भाई बढ़िया प्लेयर है. उनका एक्सपीरियंस है Yeah. बंदे के पास. तो ही इज आल्सो क्वाइट गुड. आई थिंक मिडफील्ड उनकी काफी एक्सपीरियंस है. अगर तुम देखोगे राहुल, इरविन, बेकस एंड वो सब एंड आपका मेटक्लेफ, तीनों काफी तगड़े प्लेयर है. Yep. वेरी गुड चांगते. कम ऑन माय बॉय. वेरी गुड सुभाशिष. अरे यार कोई नहीं. Still with us. The ball still with us. India throw. हाँ, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन एंड ओनली मिस्टर अरुणवा सर. हेलो सर, क्या हाल चाल? Hello. Good evening. Good evening. I'm saying good afternoon. Sorry. Good morning. Yeah. Good afternoon. I don't know. I'm very confused today. I didn't sleep well last night, and I haven't even had food so far. I don't know. I'm very edgy about this, and yeah, let's see what India can do. Due to the match or any other reason? No, during the match, good cross from Changte. Oh, beautiful ball. Very good. Ball. Come on. Yeah, but Come on, Changte. Sunil and Manveer don't get to it. Oh. Very interesting. Very interesting lineup that Igor has chosen. And so from that perspective, will be interesting to see. I think it was a question of if he's going to play a 4-5-1 or a 5-4-1. He's gone with the 4-5-1. And as I said, I think Tangri is that sort of defensive element that he needs. It's not about creativity, and it's going to be about the legs. I think that's going to be interesting as well. I think there could be also switches amongst the so-called front three. I think Sunil could go to the left, Changte could go to the right, Manveer could go up. So there are a few things that the coach can play around with. Guys, but that was a brilliant attack. Yeah. Again, quick question for you guys, both of you. India sort of created the first real moment in attack. What do you think that does psychologically for both teams? I think the Aussies are experienced enough. You see how they're spraying the ball already, trying to play around. It's a very interesting sort of type of football they play. They can be direct. They like to use their wings, but they can also spray the long balls, right? What we see in the ISL with Ahmed Jahu. So I think that's an interesting one, and again, very interesting. Of course, is also the so-called height advantage that they have, right? So that's an interesting one as well, which one sees. They've got a lot of players who are sort of 6'4", 6'5", 6'6". So that's going to be a challenge, I think, for India as well. And again, I think Graham Arnon yesterday in his press conference was very, very clear. He's come here to win this tournament. And for them, it's he didn't actually talk that much about India. Of course, he said the usual stuff. India should not be underestimated, and India is potentially a difficult opponent, and all those kind of things. But I think he was talking more about what the aims are really for in Australia in the knockout stages, which sometimes I feel is dangerous because I don't know if you're focusing enough on that group stage, because I think the Aussies or maybe even the Uzbeks might think the first two matches against India and Syria are a given. It's just the final game which will decide who's going to top the group. Maybe that might be a chance for us. But it's going to be interesting. Again, you're already seeing now India's falling deep. The Aussies are trying to spray around. Really interesting to see how we sort of cope with this. But it's a lot of running. But I think शुरुआत हमने थोड़ी सी संभली हुई की है. I think ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं की. Yeah. First attempt. You guys wouldn't mind that, right? I mean, shots from outside the box. I think because we are sort of
Yes and no. I think if he gets it, if he gets the proper contact, you see Gurpreet is quite a bit off his line as well. If Behich gets the contact, which he can, it's a problem for us. So it's going to be very interesting to see how we cope with these. I think very important is, again, I think my approach would have been to go from quarter to quarter, to look the first 15 minutes, keep the Aussies out, try and also keep the ball, try and play a little, try and get that feeling, try to get that that flair into the game. That's the challenge, I think, for us in this game. Because if we allow, again, I go back to what happened in Qatar last at the World Cup. The example of Japan against Germany and against Spain with in and around 20% of ball possession, but they won both the games. So therefore, India has to be smart in this game. I think if you're trying to play with the Aussies, it's not going to happen. If India have about 30%, 25% of the ball possession, that would be normal. The question is, if that 25, 30% of the ball possession that you could have, can you make it count? एग्जैक्टली सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एज यू हैव प्रीवियसली आई थिंक कमेंटेड भी आपने किया हुआ है, तो थोड़ी सी हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फन सेगमेंट करते हैं, थोड़ी सी कमेंट्री करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मजा आएगा थोड़ा सा। मेरे को और राहुल को सीखने को मिलेगा और आपने तो किया हुआ है, तो आप ही से शुरुआत कीजिए, फिर मैं और राहुल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? I am 7:10, 7:11, so I don't know what time you have on your watches. Okay, right. मैं 4 सेकंड पीछे हूँ, 4 सेकंड अच्छा, पीछे, कोई दिक्कत नहीं। The Indians take the ball off the Australians. Ball wide to Manveer Singh. Looking for options. Crowded out by Australians. Going back. Nikhil Pujari loses the ball. Gets it back. Plays it back to Sandesh Jingan. Plays it to Rahul Beke. India trying to see what they can do. Rahul Beke again being put under pressure. Metcalf. Sandesh Jingan with the long ball. But that goes straight to Harry Suter. The ball with Behich. There you see the Aussies with the ball. Plays it wide to Boyle. Loses out. Shubhashish Bose. Looking for Chante. Loses out. Irwin with a long one. And good one from Rahul Beke. A little push against Boyle. Goal kick for India. And there we see the referee, the first female referee to officiate in an AFC Asian Cup. A historic day. Graham Arnold not happy with the first 8-9 minutes. He wanted an early goal. Rahul Beke, who's played well for India in that centre-back position. India being put under pressures. Important clearance from Gurpreet Singh Sandhu. Suter. Chanke. I think that was keep on the ball. Good one. Sunil Chetri. Sunil keeps the ball, plays it back to Chanke. Chanke on the wing. Trying to get away from Jones. Gets the ball in. Manveer. Being crowded out by Suter. Manveer, that was too easy. Sorry, it was Rolls, not Harry Suter. Sandesh Jingan has to be careful, and that could be a counter-attack for the Aussies. And that's a foul from Apuya against Duke. Ooh. Yeah. Crucial foul. That was a crucial foul. It was a crucial foul from Apuya. Free kick. Boyle. And this will be the first real test for the Indians. 10 minutes gone, it's goalless. Chante looking good on the left. Yes. Goodwin has come across. They're the Aussie fans. That's nice. With the raincoat in the sun of Doha. Goodwin is going to take it, put it into the box, and that's a header. It was Duke.
comes across, but can't get the turn on the ball. That's It's a home. going to be the dangerous thing जिससे इंडिया को बचना है. Exactly. I think Goodwin's crosses are lethal crosses. So he has to be on Clears point. it. Yeah. Suter to Rhodes, the last line of defense for the Aussies. Behic. वो भी सर आई थिंक एक्सपीरियंस लाइनअप के साथ गए हैं. आई थिंक Yeah. उन्होंने भी And ज्यादा the रिस्क लिया नहीं है. interesting part is that Suresh is the first man in, not playing really a three-man game. He's actually trying to play a 4-2-1, throw in for India. Shubhashish Bose. Papu and Tangri playing that holding role. Yeah. But till now, I think India looks good. In first 10 minutes, India looks quite organized, I would say. Yeah. Oh, Shubhashish Bose putting a little pressure on Rahul Beke. Gurpreet back to Beke. Changte made those two really interesting run on the left side. Rahul Beke tries to play Changte. Oh, that's easy one lost. One. Important clearance from Shubhashish Bose. अरे यार. Boyle with the ball. And that's a throw in for the Aussies. The Indians need to be switched on, especially in these first few minutes. Bacchus with Very the ball good. across. Important from Nikhil Pujari with his head. The man who nobody knows where he's going to play after the Asian Cup. The moment you see it today, announced with the transfer to FC Goa. Yeah. That could be a dangerous one. Is he going to try and shoot? No, he doesn't. Plays it across. That's a header. Was it an offside? जो भी लोग भाई पूछ रहे हो मैच कहाँ पे From देख Boyle. सकते हो भाई, जियो सिनेमा में देख सकते हो मैच. सो जियो सिनेमा में आप इंडिया में देख सकते हो. दैट वाज अ गुड ब्रिलियंट. अरे यार. And Boyle. But no problem for I think, Gurpreet Singh Sandhu. Manveer wanted a foul, doesn't get it. Bacchus. The Aussies ऑफसाइड are तो नहीं था मेरे हिसाब से. spraying the ball around. India now playing a 4-5-1. Nice ball to it. Irwin. गेम थोड़ा सा खुल रहा है अभी. I think we need a couple of minutes on the ball now. I think there's The longer it lasts, it's gonna be a problem because the Aussies are gonna sort of create more and more pressure, and at some stage, that pressure then becomes a real problem. Yeah. Again, the match is being shown on Geo Cinema, on Sports 18, as well as on DD Sports. And if you're abroad, I'm at least able in Europe to watch it on OneFootball. So OneFootball has the rights, like the ISL. So all matches, I was also watching last night's match. So all matches of the AFC Asian Cup in Europe are on OneFootball. I don't know if in the rest of the world, but I know it for Europe. So nicely done. Salute. अब तुम्हारा टाइम स्टैम्प क्या चल रहा है राहुल? मेरा actually TV, so 15 minutes now, just 15 minutes. Oh, अरे तो 30 सेकंड आ गया. Cheating. My internet is so bad today. It was lagging a lot. Changte with the ball again on the left. Changte plays it back to Apuya. Plays it back to Bose. Apuya. आपका सर कौन सा है? आपका सर क्या चल रहा है? 15:01, 15:02. Sudeep Shetty, oh my god, no chance. Just hit. मेरे में नहीं बना अभी तक. मेरे में नहीं बना अभी तक. Wait. अपुया के पास Nikhil बॉल Pujari. है. Nikhil Pujari मेरे में on तो the अभी right. बैक से बिल्डअप हो रहा है. Gets across. चिंगान. And open Sunil Chhetri Very good. header. That's an open header for Sunil. मेरे में अभी तक नहीं आया. Let's wait. Just unfortunately That's the a good pace cross. wasn't there. अरे यार.
just the pace wasn't there on it for him to sort of really हाँ get good connection. It was a little He loopy भाई वो cross. he उन्होंने could have chested क्या it. बोलते कि Yeah, yeah. Australia finding it difficult. India win the better first 15 minutes. But we looks India's first really good. Really. Hmm. India's first real chance, guys. Yeah. Hmm. I would say. अरे यार अ, पता नहीं वो सुनील छेत्री का वो रहता है कि स्नीकी है वो बंदा कि पता नहीं चलता कब बॉक्स में कहाँ पे घुस गया। आई थिंक इसीलिए Yeah, वो आप exactly. देखिए कि हाइट ना होने के बावजूद भी आप देखिए काफी बार वो हेडर जीत जाते हैं। Could have gone with the his left foot. I don't think it was a foot thing. I think he could have Yeah, yeah, potentially chested it and then try to score it, but I don't think left foot. Again, you don't know how the ball will fall. You have to speculate, and he did. But yeah, yeah. I think head was still fine. It's just there was nothing on the ball, unfortunately. Young Indian football fans देखने को मिल रहे हैं. That's also good to see. Oi, offside. It was offside, anyways. Ah, okay, we're switching off Rahul. Huh? Rahul is disturbing, huh? He did. sorry, हाँ. sorry, sorry. I'm going to keep quiet. I'm going to keep मैं बाहर तो कर quiet. मैं दो, तो बहुत ही बाहर कर पीछे दो, हूँ. हाँ. बाहर कर दो उसको. मैं तो मेरे में तो अभी थ्रो इन हो रहा है. अरे कोई नहीं भाई. Sandesh पता Jingan? चल जाएगा ना अगर इंडिया गोल करेगा तो. If India scores, I'll keep quiet because I want you guys to enjoy the moment. ऑफसाइड था भाई वो मिच ड्यूक. But he's not gone to attempt. He didn't attempt to play the ball, so I think Exactly. that's why. संदेश जिंगान मोको तो भोसों को डांटते हुए कि क्या कर रहे हो. Corner for Australia. First corner I think. Yes. First corner of the game. Well done. Foul. Who was this? Push from Hello. Suresh. John Mascarenas by hello bro after a long time. Oh, it's good Till now there is pressure. a no card from the referee. It's good intensity from India, at least in the middle of the park. Now it's looking like a 4-4-2. Oh, Deepak Very Tamli good doing भाई well in that Subhasis middle. post. Very good. Very good. Australia finding difficult to get into the India's box. yeah. Nah. Wrong side, Apuya. अरे यार. Let hope we maintain this intensity throughout the game. Then and then only we can expect कि कुछ हो सकता है. अरे यार Brilliant. क्रांत थे यार. कोई नहीं गुड भैया. Lot of Indian crowd. Most of them are will be Indians. I think अभी crowd आ रहा भी होगा. I think अभी तो थोड़ा सा वहाँ पे तो early kick off है, so maybe थोड़ा से बाद में भी join हो सकते हैं. Maybe second half में It's हो not भी an सकते early हैं. kickoff. Oh. The Middle East, they come in late. Late, हाँ. So after half an hour, even 40 हाँ, minutes, you'll really see what the stadium is. please. Big Gurpreet mistake. बच गए ना. मिस्टेक बोले कि बच गए ना. Yeah, but huge mistake. Can't Yeah, afford to. yeah. अब मेरे That can't Oh, happen again. oh three you chances. can't do that. Why Yeah, you can't do that?
I'm surprised I'm surprised he didn't shoot. Because he's bad with his foot, no? No, no. That's It his was a problem. huge moment of the game. I think it was Craig I Goodwin. had- He could have shot. I'm, He could have I'm shot. having something sweet. I am craving for something sweet. I have to eat something. कौन सा पिज्जा है क्या ये? Looks like a waffle. waffle. आवाज नहीं आ रही सर आपकी. He wasn't also sure in that, he didn't fist it. He just palmed it away, huh? Didn't look too confident on it. Exactly. I think nervous moment, and then Yeah. And we need a Gurpreet in super form today. उसकी ओर से तो भाई एक भी एरर आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो काम खत्म ही है. it looks like Australia figured out when to trigger the press. It looks like when it comes down to India's left, Subhashish Bose and Rahul Beke, that they want to trigger the press. It just अनुराग भाई बोल रहे कि अरुणाव सर विद द टेस्टीएस्ट मैच स्नैक. It's called, actually in German, it's called a Schnecke, which is a snail. So it's formed like that. And I haven't had food at all in the morning, and I'm nervous eating now. The problem is, Rahul, I know what you're saying. The point is the right is not existent. Manveer at the moment and Nikhil are not existent. So the pressure is on the left because Changte and Subhashish as well as Rahul Beka are trying to create something. So India's right side need to pick up. The Aussies are playing as if they're trying to set up the game, right? So it's a question of time when we will score, and that's the dangerous part. We need to be very. Boyle won't get to it, luckily. So so far so good. First quarter gone. Yeah. They'll be fine. They'll be happy. Come on, lads. I think first quarter में हमने सब कुछ देख लिया. India created those close chances. Sunil Chhetri's header. Then what a turn! What a turn, Chante! What a turn! Got a book. Aussies fans are also looking nervous. They are all not, you can say, that much confidence. So let hope so. ऐसा मोमेंट कहाँ आ गया तुम्हारे मैच में भाई? हमारे में तो आया ही नहीं अभी तक. दीपक टांगरी. Nice little turn. Changte will give you a good moment. That was a brilliant turn by Changte at the moment being our best player in the attacking unit. Guys, yes. I have one doubt. So I mean, the Changte just won that foul. Don't you think we should have probably sort of loaded the box and gone for a direct free kick instead of trying to play like they went? I think it was near to the half line, so that's why. But the problem is you have to put in your defenders, no, up front. Otherwise, you've got a height problem, no. Yeah. No, but at least something into the box. Just get it in, even if it's at the halfway point. I think halfway में तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने बॉल जीत ली एंड फिर आपका काउंटर पड़ जाएगा तो आपके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा. आई थिंक थोड़ा सा अगर आप यू कैन से कि आगे होगा बॉल, देन आप वो रिस्क ले सकते हो कि हाँ भाई आप बॉल वहां पे जीत सकते हो. एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको जाना चाहिए डिफेंसिवली rather than taking too much risk. Fair enough. Changte is our best attacking player in this first 25 minutes. He's been brilliant.
I think nervous. हम Lu- सब. I lucky, think every Indian fans lucky, are now nervous. lucky there. Uh, Rahul Beke with that Yeah, clearance, which nearly yeah, went into his own goal. own exactly. goal. हाँ. Gurpreet should But have given. Beke, I don't know if Gurpreet gave him a shout. Hmm. no, it देख के looked भाई. again. हाँ Yeah. हाँ देख के But भाई. but the problem is, Gurpreet doesn't look confident to me today. He's not, Yeah, you know, yeah. he looks, and I think Rahul Beke realizing it didn't take a chance. I think every Indian football fans currently are on their edge on the seat because Absolutely. जिस तरह की 100%. मैच चल रही है. You never know, anything can happen. Oh Second corner, man. I think. This is the second. Second corner just goes over Gurpreet's bar. He went for a direct. He went for goal direct. अच्छा ये थर्ड, उसमें थर्ड है अभी. तुम आगे हो भाई, एक और ले लिया. हाँ नहीं वही है. I think. यहाँ पे उसमें पहले क्लियरेंस हुआ ना भाई. पहले क्लियरेंस हुआ, अब दूसरी बार वो ले रहे कॉर्नर. But you have to कैरी remember, सोतर it's और like वो. also if you look Qatar and लेबनान. Lebanon yesterday, Qatar scored at the break just before halftime, scored in the हाफ middle of टाइम. the हाँ. second half, and then scored in injury time in the second half, right? So I think बट सर कल अफीफ क्या क्या खेल रहा था. मतलब जबरदस्त. I think he is on top form yesterday. He scored 2 yesterday. yeah, Yes, he scored 2. he scored Almost two. Ali ने I भी भाई could have बेहतरीन. he could have scored Fair more. foul. So नहीं वो तो सर हमारे लिए अच्छा ही है कि जो भी टीम थर्ड पे फिनिश करने का चांस है दूसरे ग्रुप्स में, वो बड़े मार्जिन से ही हारनी चाहिए, ताकि जीडी सबका ही बेकार रहे, तो हमारा स्लाइटेस्ट चांस बच सकता है. True. That's अगर true. तीन That's पे true. तो लेबनान तो मैं कल एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मिनिमम 3 गोल मार्जिन से हारना ही चाहिए. And वही हुआ, 3-0 से हारे. बढ़िया बात है वो, क्योंकि लेबनान कैन फिनिश ऑन दी थर्ड. तजाकिस्तान का आज मैच है चाइना के साथ, ग्रुप ए का, हमारे बाद. सो वहाँ पे भी हम चाहेंगे कि तजाकिस्तान भाई ऐसे ही गोल मार्जिन से हारे. मुश्किल लग रहा है, चाइना के सामने अच्छी फाइट दे सकती है तजाकिस्तान, बाय द वे. बट ऐसी स्कोर लाइन रहेगी तो हमारे लिए भाई फायदेमंद हो जाएगा. सो हैप्पी विथ इंडिया परफॉर्मेंस, तो एवरीवन इज पुटिंग देयर हार्ट्स. Changte again, very good feet. He's been really good. स्टीमेच भी अभी तक काम ही रहा है. मतलब ऐसा कोई उसकी ओर से भी इतना ज्यादा कोई फ्यूरियस रिएक्शन नहीं आया है. इज आल्सो बीन लिटिल बिट, यू कैन से कि इन अ मोर वेरी गुड. चांगते यार, चांगते क्या खा के आया है आज. ही इज इन कंप्लीटली इन अ डिफरेंट टच. मतलब मुंबई सिटी में ये चीज मिस हो रही थी. Do you guys think Changte sometimes just feels more comfortable on the left? no, I think if you look at the last game before the break against Chennai, where Changte also scored in the second half, सेकंड it हाफ. हाँ. depends on how you're playing. So therefore, I think for him, put him on the right, put him on the left. I think he's good on both. With the right, he has that advantage that he was able to score, for example, with his left foot. Oh, be careful. सुभाष इज मेकिंग द राइट डिसीजन टिल नाउ, होल्डिंग अप, प्रेसिंग ऑन टाइम. एग्जैक्टली, आई थिंक अभी तक तो उसने भाई सही डिसीजन बनाए हैं. टांगरी ने भी भाई अभी तक अच्छा किया है. सो राइट He's नाउ been अभी good. तक आप बोल सकते कि फर्स्ट हाफ एन आवर में उसका जो डिसीजन है खिलाने का, वो अभी तक तो राइट प्रूव हुआ है. लेट होप सो. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि उसने कोई कार्ड, मतलब वैसे भी कोई कार्ड यहाँ पे खाया नहीं. सो दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. बिकॉज़ अगर आपने कोई रैश टैकल किया, देन वो एक आपके साथ वो रहता है. 90% बॉल लॉस्ट हैज़ बीन डन बाय निखिल. भाई देखिए, कुछ प्लेयर को थोड़ा-सा सेटल डाउन होने में टाइम लग रहा है, बट लेट होप सो कि ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक अभी तक निखिल पुजारी की ओर से हुआ नहीं है. No, but that's a अनदर very कॉर्नर भाई, normal thing. कॉर्नर पे कॉर्नर आ रहे हैं. But it's a very normal thing ऑस्ट्रेलिया for the fullback to lose the ball most of the times because you play it out to the fullback and then he tries to go long if he doesn't have an option, लॉन्ग. and you हाँ, will lose the ball. ऑप्शन. So हाँ. that's normal. Yeah. Another corner to Australia. Yamashita is telling someone that calm down, no ruckus in the box, otherwise I will show a card. चलो चलो, बच गए.
कम ऑन इंडिया मोर देन 1/4 मैच डन। यस भाई, अभी थर्ड क्या बोलते कि 33% गेम इज ओवर नाउ, 66% गेम लेफ्ट, एंड अगर इसी तरह से हमने होल्ड अप कर लिया देन भाई हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, वो वाली चीज हो जाएगी। Again, to be फाउल, अरे honest, यार फाउल क्यों नहीं दिया वो? I think to be honest, like Australia have not peppered India's goal, or they have not created loads of clear-cut chances or anything yet. Chances. So I think it's fine. Like we're still looking okay. But that was a foul, वो बॉक्स के एज ऑफ द बॉक्स। आई थिंक कौन था वो, निखिल था? हाँ। It looks like Australia is looking at those, trying to, creating a lot of half chances, and that's good for us. They're not creating really real big chances, so that's good Real for us chance. so far. Yeah, And- exactly. एक चीज और मेरे को मतलब लग रहा है कि आप देखिए कि 1 वर्सेस 1 में भी उतना ज्यादा वो मतलब हमको ओवर पावर नहीं कर रहे हैं, जो आप जब क्वालिटी साइड के सामने खेलते हो, तो आई थिंक हमारे प्लेयर अच्छी तरीके से उसको भी थोड़ा सा क्या बोलते कि अपना होल्ड अप करने में अभी तक एटलीस्ट वो कामयाब रहा है। And exactly, Another- you said the most important thing at the end, abhi tak. हाँ। The question is, can you keep this going for 90 minutes or 90 plus minutes these days? Because you Guys, see the tempo, Yeah, no. foul, yeah. Guys, I think Arunag's making a good point. Manveer has to sort of help on the left, because it does look like they are doubling up on Nikhil. And Nikhil, yes. he needs help he needs Manveer's help. And they're now, and they're slowly realizing. Yeah. ऑस्ट्रेलिया मैनेजर की नींद उड़ रही है। ऑब्वियसली उड़ेगी भाई, अगर फर्स्ट 45 मिनट में गोल नहीं आता तो सेकंड हाफ में प्रेशर बढ़ता ही जाएगा उसके ऊपर। आई थिंक उनका भी अब गेम प्लान दिख रहा है कि दे दैट इंडिया राइट साइड से वो जो है वहां पे ज्यादा स्पेसेस मिल रही है, सो दे आर ट्राई टू क्रिएट मोर विद दैट साइड। Another corner. अरे यार कॉर्नर कल It's very interesting that the right side of Australia and the left side of India is the more active one. So there's a lot of that's the active flank in this game so far. Guys, कल I ईगो think again, नहीं notice something नहीं, राहुल। interesting. हाँ बोलो बोलो। The Australians have gone with a right-footed from this right side of the corner flank this time. So they've changed it around. I think sort of they And that tried was the a- left-footed corners was a and very- didn't work out. That was a very important interception from Gurpreet. I think. Yeah, I good don't know if claim. Suter or Rowless or Suter was behind to get on But the then ball, bounce on the ball. Then Gurpreet releases it to absolutely no one. I don't know what he was doing there. Could have just Doing- held on to the थोड़ा ball. सा आई थिंक टाइम लेना, उसने उतना जल्दी मतलब क्या कोई आपका वो रन भी नहीं बना रहा था। And that's the problem, right? Our thing is that, again, if you see, the pattern is very, very clear. It's I don't know what the stats are at the moment. I don't know. Can I see the stats here? अरे बिल्कुल बिल्कुल ग्रेविटी भाई, बिग डे फॉर इंडियन फुटबॉल भाई, बिग डे। एंड अभी तक तो हमने अच्छा खेला है भाई, 35 मिनट्स को। So the stats are at the moment 60-40 Australia, 6-1 shots for Australia, 2-0 on goal. So that's the point. But No, 60-40 you said. Yeah. That's not bad. I thought it would be a little more in favor of Australia. Because we were good in the first 15 minutes. Yeah. आई थिंक अब थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है गेम, मेरे को लगता है इंडिया को थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अब क्योंकि लास्ट के 10 मिनट बचे हैं फर्स्ट हाफ के, एंड दे विल नाउ यू कैन से कि कम अप विद द मोर इंटेंसिटी। Exactly. Which is why I'm not able to understand why Gurpreet released it that quickly. हाँ, that was a crucial block from Sandesh Singh. I think he wanted to look at options in regard to either Sunil or Changte maybe up front. Yeah, but again, the player wasn't there, and I think he didn't look. Again, maybe he's looking into the sun. I don't know. The Australians, as Rahul says, have changed their strategy with the corners. Cleared by Sunil. Comes back. Boyle. अरे यार बेटर क्लियर कर सकते थे यार, चांगते यार।
कोई नहीं टांगरी That was चलो Sunil. चलो 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 क्लियर कर दो हाँ बढ़िया 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 चल चांगते Foul. Yeah. Yeah. Subhashish Bose. Again, set piece. We're giving away too many corners and free kicks, and that's the Crickets. danger. कल कल ईगो स्टेमिच ने नहीं बोला था किसी ने पूछा उनसे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने कि सेट पीसेस और उसमें वो डेंजरस है तो उसने बोला कि सिंपल बात है कि हमें कंसीड Don't be नहीं करना है वो Yeah. डोंट कंसीडर इट It could be interesting if the left footer is going to go for this or the right. Looks like Goodwin. Sandesh clears. I think Goodwin will take that. Goodwin has luckily so far Goodwin has not have had a good game like he had against Bahrain. Yeah, no, I think weirdly Goodwin hasn't done much. Yeah. So therefore it's not a good win, no? It's a good draw. Bad win. It's a good draw for India so far. Very well played. But again, how long can you sustain the pressure? That's going to be the question. I think that was a Manvir who cleared that set piece. Manvir. Yes. My bad. That's why I don't agree on with Vineet saying that Mahesh for Manvir we need Manvir for the height. Oh, that's absolutely. I think Manvir and Tangri will be really crucial on those set pieces and corner defending. How many corners have they had? Have they had already 10 or 11 corners? Or 8 or 9 easy. 7 to 8. But the lucky part is their shooting is woeful at the moment. That's woeful, the saving grace for us at the moment. Terrible. But we need to create. We haven't created since that Sunil header, no? If I'm right. Yeah, we haven't. We haven't done much since that. Then we after that we only had done the defending part. Okay. This is where and Manvir has to be careful because she's telling him now for the third time, you're not going to hold on to Harry Suter, and if you're going to do that, don't we're doing well. Don't give away a useless penalty now. Exactly. Yeah, absolutely. Guys, 38 minutes. I think we've done well. Come on, hold on to this, till halftime somehow. बच गए. Lucky us. But they seem to be getting closer. I hope not, but closer. I think that's why these 7 minutes are going to be crucial. यहाँ पे थोड़ा सा गेम को हम स्लो डाउन करना चाहिए अब वो एंड Tim Cahill in the stands. थोड़ा सा अपना नर्व्स को काम डाउन करना चाहिए. But wingers are losing in physicality big time. अच्छा. Bekas is also a good player. We need Pandita for Chetri can give more height and I back his quality. अरे पाजी क्या कर रहे हो संदेश पाजी बच गए. Sandesh has had a couple of iffy moments this half. ये कौन बंदा है वो जो दिखाया वो बीच में? Tim Cahill. हाँ Tim Cahill हाँ. Australia legend. Former Jamshedpur FC player. That's good defending, guys. Good defending. Good organization now. Come on. आज कमेटी टीम खेती रह जाएगी. ऑस्ट्रेलिया नीड पेशेंस. कहती रह जाएगी. अच्छा बस हमें बस वही करना है. Australia is playing the patience game, no? I think that's the thing, no? They are not. Tim Cahill looks worried. Hectic. Obviously, Rahul, अगर first 45 मिनट में गोल नहीं आता तो they need you can say कि to think about it. ऐसा नहीं है, no doubt उनके पास अभी भी सेकंड हाफ बचा है बट आई थिंक इंडिया प्लेड वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि लक के साथ हमने फर्स्ट 45 निकाला है. वी डन प्रॉपर डिफेंडिंग. सो दैट इज द इशू. अगर आप ऐसा है कि फर्स्ट 45 मिनट में आपने अगर चांसेस बनाए इंडियन गाइस वेयरिंग ऑजी फ्लैग्स हाँ ये कौन है साले? रॉन्ग जर्सी नॉट ब्राजील. रॉन्ग जर्सी. हाँ इसका फोटो खींचो. अरे भाई. It was like the Twitter discussion today is like Manja Para should not be wearing yellow, they should be wearing blue. I think that was a big discussion today on Twitter.
No, obviously that should be the case without a discussion. They should be wearing a blue. Careful. भाई रोको रोको उसको यार, रोको काउंटर क्या अरे यार निखिल मेरा भाई क्या कर रहा है? चलो Metcalf. चलो चलो कोई नहीं। Metcalf. And that was the first good cross from Godwin, huh? The real first Yeah, good yeah. cross from him. Yeah, on his And left foot. Raul Beke. Yeah, Raul Beke. Ooh, that Crucial, was very crucial. close, huh? Ooh, that was very very close. And Igor is getting agitated. There's This a is bad the phase. collision. This is Three the phase guys now now. where you have to. जफिन जोनी बोल रहे इंडिया will be defeated by 3 goals by Australia. Let's see bro, let's see. Let's I wait hope for the not, second half. but. Couple of guys. Sandesh down. down. Of the people. अरे यार क्लैश हो गया, तीन बंदों का क्लैश हो गया भाई. आई थिंक ये अच्छा हुआ, थोड़ा सा टाइम निखिल? कटेगा. Exactly. यार. I agree. लेट होप से ज्यादा लगाना हो भाई. Oh. That was Sandesh won it though. Sandesh won it. निखिल पुजारी सैंडविच बन गया बेचारा. that was a really harsh on him भाई. बंदा बेचारा है भाई, दोनों के बीच में. I think the Australian guy What was is the the- Harry Schroeder. कौन था? No. Raul's. Jersey is Raul- bleeding. अच्छा. Jersey. She's showing Jersey. It's hurting on the side, but the Indian head is gone, huh? Nikhil Pujari standing, that's good. Steamach explaining Apuya a little bit of football. What is Apuya thinking? No comment on that thing. I think we need Apuya. But that's a good thing. I think this is a good to see. We need Apuya to get into this. Like Australian fans are also not looking that much excited after this first 45 minutes. And Messi is there in the stadium with an India flag. couple of Messis. Obviously. Couple of Messis. He is showing to the other fans. And he's holding the India flag wrong. So that guy's banned. These guys are holding the Aussie flag wrong. It's another corner. Interesting. अच्छा वो संदेश जिंगन हो गया खड़ा, हो गया रेडी. Yeah, he's good. He's good. चलो He गुड looks good. चलो बढ़िया भाई. But he's अब not देखो there. अब क्राउड He's ज्यादा not दिख there रहा to है. defend this corner. He's not there to defend the corner. But Arey yeah, yaar. but he has to go out. But that's the rule. Sandesh, that's you don't like it, it doesn't matter. It's the rule. You've been treated. You have to go out and then next situation you can come in. Come on, Get to guys, your come position. On. Defend this corner, guys. Come on. I hope it doesn't disturb Sandesh now. Yeah, you have to go to the side. Why to come? Are you new to a football field? Just go to the side. My God. We need to do well, huh? This corner. नहीं जा रहा है. Yeah, you have to wait. You have to wait till the Come ball on. is shot. Superb, guys. Superb. Achha, I think 3-4 मिनट का मिलेगा. I think look at- injury time. Okay. I think 2 minutes. Yeah, easily. No. You'll get another 3 for this, and you'll get 1 anyway. So you'll most likely 3-4 minutes you'll get now. 4 minutes मेरे को भी लग रहा है मिलेगा. 5 minutes, guys. No. 5 minutes. Obviously. 41 पे वो हुआ था injury, so that makes sense. So and the point is that you've seen yesterday also, like in the World Cup, they're giving extended injury time. Extended minutes. Yeah. So probably his game is going to go on for around 100 minutes. Yes, obviously. Igor Stimac is back. He's arguing with the officials. I think probably about the time. मेरे में अभी दिखा रहा है वो 5 minutes का साइन रेफरी. What do you do? Oh, Suresh, Why my is it brain. 5 minutes? You could do 1 minute. Stimac You being give why Stimac. 5 minutes? Give 1 minute. 1 minute is For enough. what 5 You minutes? give 5. 1 is enough. But that injury is already 3.
and you give 1 or 2 minutes Hmm. anyway. So then 5 is Hmm. okay. 4 would have been. I said 4 would have been perfect. Perfect. Oh, Manvir down. Oh, Suresh, From range, just but didn't catch it. First shot on target for that's India, an easy though, one. guys. हाँ थोड़ा सा और पावर See, पावर and चाहिए था. this is the bullshit about statistics. The statistics are of no value. Of no value. No. Yeah. Another अरे corner. यार रोको Oh, इसको, and Nikhil is काउंटर को down. रोको यार, रोक लो. गुडविन क्रॉस मत डालना सही से, बस बढ़िया 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 भाई. अनदर कॉर्नर कंसीडर्ड बाय Oh, इंडिया. Nikhil is down. निखिल पुजारी क्या हो गया भाई? Deepak's down. I think he's rolled his ankle probably. Oh no, it's stepped on his ankle. Irvine stepped on his ankle. Not intentional, कार्तिक but no, intentional नहीं था. But looks like a pretty. Nikhil nothing. Pujari is gasping for air. I hope Nikhil is good. Oh, Man. is it in the operated foot or the other foot? I don't know. Was it left or right ACL with him, Tangdi? Right. Ow. Okay. He fell on it. Or no, he didn't step on it. It was like a weird, like he just grazed it. It looked like. Yeah, but he छू के didn't. चला गया वो, Yeah. ऐसे छू के चला गया. But in real time it's hurts. Yeah. Must have hurt. Otherwise, he's called the. No, it will hurt. I mean, there's a contact. Yeah. Now. Yeah. I think Pritam Kotal and everyone are मतलब I think this is the thing, मतलब जो एक क्या बोलते हैं कि हम देखने के लिए इंतजार करते हैं कि प्लेयर्स में भी वो एक दिख रही है चमक कि हाँ भाई यहाँ पे वो परफॉर्मेंस देनी है. एवरीथिंग इज Come on, guys. Couple more minutes. चलो भाई, 1 ही मिनट बचा है अब तो. अच्छा अजी 2 मिनट बचे हैं. हाँ 5 मिनट है ना. अनदर कॉर्नर भाई, कर लो डिफेंड, करो डिफेंड करो. वेरी गुड पुजारी, वेरी गुड. शॉट ब्लॉक करो. राहुल तुम्हारे में तो हो गया होगा ये सब. नहीं हाँ हो गया, मेरे में हो गया. So that's why I don't want to spoil it for you guys. Suresh Wangzam's insane another how players. many it's insane how many corners Australia's had. Huh? Yeah, crazy. Oh my days. Consistent focus, that's all India needs right now. फर्स्ट हाफ खेला 0-0, हमने आधा मैच तो जीत लिया है. हाँ लेकिन आधा भी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हाफ ही बाकी है भाई. हमने काफी अच्छी टीमों के सामने फर्स्ट हाफ तो अच्छा खेला है. नाउ द क्रूशियल सेकंड पार्ट इज कमिंग इन. टू Sunil Chhetri and I think Manvir both are pressing really well for this last 1.5 minute. Oh. अरे यार ओपन बच. अच्छा आई थिंक राहुल का रिएक्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से बच ही गए होंगे. नहीं क्या, I don't know why again Manvir is not there to help on the right. Again Right. Nikhil Pujari gets doubled on, and they're getting so much joy on that side. And Goodwin is slowly but clearly, getting better. Yeah. Better. Oh, Sandesh down. Oh. Like we need some. Manvir has to help out on that right hand side. This doesn't make any. Is he asking for a penalty? No. It's hit his chest clearly, like on the replays. No issues at all. I want Pritam for Nikhil, please, man. Ooh. It's a clear chest. Was that chest? So there, Yes, clear clean chest. chest. So that's not open. And he's now also you can say he stand up. So Otherwise, a heart attack. Not at this time of the game. Obviously. सबके बारे में हिरल भाई अभी बात करते हैं. फर्स्ट हाफ खत्म तो होने दो, ये साला खत्म ही नहीं हो रहा है. 5 मिनट है, इतने 5 मिनट लंबे क्यों लग रहे हैं? जनरली भाई फटाफट चले जाते हैं. I think हो गया नहीं राहुल, 5 मिनट हो नहीं गया. Yeah, but you've had another minute. She'll give because of injuries. She'll give another minute. Yeah. Because of the Tangri's injury. And interesting is also Changte and Manvir have now switched sides, huh? Yeah. Good press from India. Very good. So I think there is a no card in the first half. That's also big relief for India. Yeah, There is for not sure. a single yellow card from the Indian players.
Yeah, I think Vikram can help in defense. Absolutely. Hmm. We need somebody to help in defense. But you need that height from Manvir in the corners of Yeah. Yeah. Hmm. against Harry Suter. It's so weird because you need somebody to help But I down think that that. this is a good balance. One winger is you can say कि height wala player, and Sankte is you can say कि more threat. So I think Oh, good defending, Nikhil. Brilliant defending, man. Good stuff. Okay, Yeah. I I think mean, that sorry. that was It'll Chankle. come. It'll come. No, Sankte it'll come. brilliant. It'll come. It'll come. Half time, guys. I can officially. Oh no, it's not. वेरी गुड भाई, वेरी गुड. हाफ टाइम हो चुका है एंड इंडिया ने भाई फर्स्ट 45 मिनट में बेहतरीन तरीके से भाई डिफेंडिंग की है यहाँ पे. थोड़ा सा लक भी साथ रहा, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो भी चाहिए. लक्स फेवर दी ब्रेव्स जो बोला जाता है. And it's fun because Nikhil Pujari did 3 mistakes, and you're thinking, what is he talking about? Well done, Nikhil Pujari. Yeah, but he's done well there on that occasion. राहुल, सो फर्स्ट थॉट अबाउट द फर्स्ट हाफ. व्हाट आर द गुड मोमेंट्स फॉर इंडिया? क्या चीजें और भी ज्यादा बेटर करनी चाहिए? I think we started well. We started the first 10-15 minutes well. We need to sort of get better on the break, because if we don't provide an outlet on the break, this is going to keep happening. They're going to keep coming and we might eventually concede. So I think we need to get a little better on the break. We've defended well. Nikhil needs help on the right. So I think that's why they've probably switched flanks. But Manvir do you see Nikhil substitution and bring Pritam Kotal on that No, point? I don't think so. I think Nikhil has been fine. It's just that he needs some help down that right hand side. Okay. Other than that, what are the key players जिन्होंने फर्स्ट हाफ में आपको लगा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है? Chankte has been brilliant for India. So good. I thought Subhashish was good. Yeah, I think Chankte was a standout. Tangri was solid. Yeah. Apuya with a lot of defensive duties. Rahul Beke had his moments. Subhashish Bose did a good. I mean, overall, I think the whole team. I think Manvir is the one where you can sort of, with the dropping, I think that's an important one. Tangri proved 45 minutes well. Tangri का मूव आपको कैसा लगा? I think the right move by the my only concern is that Sandesh has taken a hit. Nikhil seems to have taken a hit. I hope Tangri, their ankle is not too serious. And and we can continue for this for another 45, because you see the pace and intensity is higher than what these players are usually playing in the ISL. So that's also a reality of things. So therefore, I hope that they can keep up with this, because so far we defended very, very well as a unit, and especially the left side of the field was our stronger part. With Beke, Bose, and with Chankte on that side, right? So that was sort of the strong, and even Deepak Tangri being more on the left. So it's interesting that we were speaking earlier this month about our potential possession. Okay, your possession, Australia 71-29, 14 to 3 shots, only 2 on target from the 14, 306 passes, 130 for India. Passing accuracy. Corners कितने हैं? 12. 12 corners. And 12 corners. As expected. Yeah. All played well if Sunil scored that. I think the biggest moment in the first half for us in terms of the attacking wise was that Sunil Chhetri header. I think that was a really, really close. Rahul, what do you say? No, I agree. I think from an attacking perspective, that was our best moment. But we need to we need somebody to just hold the ball up for a few seconds, just give everyone else a breather, because like I said, it can't keep coming. If it does, and they'll eventually score. So we just need a little more going forward. We're doing well. लास्ट 15 मिनट में मेरे को लगा कि ज्यादा बॉम्बार्ड हो रहा है उनकी ओर से. मतलब आई थिंक फर्स्ट 25 to 30 मिनट वी वर गुड, कि थोड़ा सा हम क्या बोलते कि अटैकिंग थ्रेड भी हम भी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लास्ट 15 मिनट फुल ऑन हमें डिफेंडिंग ही करना पड़ा है. एंड कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत भी देने लगा. जैसे सर ने अभी ड्यूरिंग द लाइव भी बोला था कि भाई क्रेग गुडविन अपने मोजो वापस में आ गए. लास्ट 15 मिनट में काफी क्रूशियल क्रॉसेस उन्होंने डाले. सो वी नीड टू दैट. प्रणव बोल रहे कि सुरेश आउट, ब्रेंडन इन. व्हाट आर द सब्स्टिट्यूशंस सर आप देखना चाहोगे इन सेकंड हाफ? No. Particularly half time substitution 60. I would not do any substitutions now, because I would like to see in the next 15 minutes who is doing how.
I think Deepak Tangri is coming back from a long injury. For every player, this intensity, this tempo is higher than what they normally play in the ISL. I hope Sandesh is not disturbed by that turban and head injury. At the moment, at least for another 15 minutes, keep it like it is. But have a conversation with Manveer, say, bhai, thoda sa aur karo. And interesting is that he's now switched Changte and Manveer, which would be interesting to see if Changte is going to drop back a little bit more. So that will be an interesting one. So therefore, from that perspective, we've done defensively very, very well. Sunil with that chance. But again, after 15 minutes, 16 minutes, as I would have expected, we've dropped. And the question is, how far do we drop and how many corners? I mean, 12 corners is quite a bit. And luckily, Australia, 14 shots and only 2 on target. That tells you the story that their finishing, luckily, has been terrible so far as well. So, राजन भाई, आप कोई पुराना मैच देख रहे होंगे भाई. बैकएंड चांगते वर ब्रिलियंट भाई. आई थिंक आपने मुंबई सिटी का मैच देख लिया होगा चैंपियंस लीग का. अदरवाइज बोथ आर रियली गुड भाई. टेंगरी वाज बेस्ट भाई, ऑब्वियसली. आई थिंक टेंगरी के लिए भाई जब क्या बोलते हैं प्री मैच शो कर रहे थे, हर कोई आते ही पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्टार्टिंग 11 में टांगरी क्यों टांगरी को खिलाया. एंड आई थिंक एग्जैक्ट 45 मिनट्स बाद. But I said that, when we spoke about it before, the question is, who do you bring in? What do you do? So you're not even using Suresh as a 6. You're using Suresh as an 8 or a 10. Yeah. But Suresh is your first, which is Suresh is your first man to go out, but Suresh then drops back into the line as well. So that is, again, that's what I said. The question is if we're playing 5 at the back or we're playing, 4 at the back and 5 in the middle. And this decision, they're doing right. So therefore, but again, can we sustain this pressure for 90 minutes? That is going to be, are we going to see the usual drop after 70, or can we sustain this for 90? That's going to be 90 plus. I think he's Rahul, just to नहीं add to one point. हमने जब क्या बोलते बिफोर द मैच हम दोनों डिस्कस करते रिगार्डिंग द कार्ड्स, तो फर्स्ट हाफ में हमने एक भी कार्ड कंसीडर नहीं किया है, मतलब येलो कार्ड हमने एक भी नहीं लिया है. सो व्हाट डू यू से हाउ इट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल फॉर द सेकंड हाफ? Very crucial, because this allows you, for example, if we get caught out on the break, this allows you to sort of make those tactical fouls in the second half. It doesn't put you on the ropes, especially those 3 midfield players. If they want to bring an Australian player down in transition, they can do that. They can do it without sort of being bogged by the fact that they're already on. We just have to be careful with this corners, because she's now pointed it out twice, so that we don't hold on to the attacking player too long. So therefore, from that perspective, it's good. And that fighting intensity, especially with the corners, that we need to keep up. And again, it's going to be interesting also how Australia react, if they're going to change something, if they're going to play like this, or if they're going to try and change something in the way they're playing. Because I don't think Graham so. Arnold will not be happy. So that's a good one for us. I don't think so the referee was nervous. I think there are no such incident कि वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ हो. I think there are a couple of moments in first half में I don't see any thing there कि जो यहाँ पर clear cut मतलब yellow card बनता ही बनता था. So I think refereeing wise I don't see any horrible referee कहाँ से होगी भाई. I think it was a very good. We are referee. really happy till. Sorry. Very good refereeing. Refereeing has been good. So the problem is that people are now in their zone. No? To every match, referee you have to criticize. No? But I think उसने अच्छी तरीके से हैंडल किया मैच को, कंटिन्यू रखा. ऐसे कोई मतलब क्या बोलते कि हल्के जो पुशअप थे उसको उन्होंने वो नहीं दिया है फाउल. He continue with the. But they will not give it. Hiren, you will see it also in Europe. What the fouls given, let's say in a Bundesliga or a Premier League, will not be given in the Champions League. That is usual. So therefore, you have to be ready for that. I remember when Rahul Beke got 2 quick yellow cards and was sent off. In the ISL, they would not have been given the cards, but here they're given. So therefore, you have to adjust. So therefore, we've done very, very good. Now the important thing is continue with what you've done so far, and whenever the substitutes come in, you have to continue with that. And but again, the I think a lot of blocking work is still left.
बट द बिगेस्ट थिंग इज सर सेकंड हाफ में हमने इंडिया के साथ जनरली देखा भी है जब हमने रिसेंट पास्ट पास्ट में भी चाइना, सऊदी अरेबिया, इराक के सामने खेला है। फर्स्ट 45 मिनट्स वी वर रियली रियली गुड, बट द सेकंड हाफ का जो फर्स्ट 15 मिनट है, 45 टू 60 मिनट, वहां पे कहीं ना कहीं हमने काफी गोल कंसीड किए हैं। सो राहुल, हाउ डू यू सी दैट सिनेरियो कि किस तरह से इंडिया को यहाँ पे जो फर्स्ट 15 मिनट होने वाले हैं सेकंड हाफ पे, वो कितना क्रूशियल है and वहां पे कितना ज्यादा फोकस एंड डिफेंसिव वाइज आप देख रहे हो? I think this is where it becomes very important for us not to sit back too much. We need one or two moments in attack. If we let Hmm. them, that's what we did in the first half. They didn't do anything in the first 15 minutes because we sort of provided an attacking threat. If we don't do that, they're going to come on to us and we could potentially concede. So I think it's important for us to have one or two moments in attack in those first 15-20 minutes of this half. डार्क नाइट पे 6 मिनट इसलिए भाई क्योंकि 3 मिनट तो आपके संदेश जिंगान के वो हो गए थे एंड पूरे हाफ के आई थिंक 2 मिनट बनते थे, तो दैट्स व्हाई 5 मिनट उन्होंने दिया। फिर 5 मिनट में भी 1 मिनट वो दीपक टांगरी का क्या बोलते हैं कि जो इंजरी हुआ उसके चलते हुआ। सो आई थिंक इट्स जस्टिफाइबल। टोटल 5 मिनट्स आई थिंक बढ़िया थे, बट आई थिंक आई डोंट सी दैट मच वो इश्यू एंड आई थिंक वो हमने देखा भी है कि कल भी हमने मैच में देखा था कि आपको जो गेम टाइम है वो ज़्यादा ही मिलने वाला है। वाज़न्ट इट फाउल ऑन जिंगान, gave a corner instead, Miles offside didn't flat it, pathetic display, gave a corner। एक आध डिसीजन तो भाई सौविक पोल भाई ऐसा होता है। अब कोई भी रेफरी दुनिया का ऐसा नहीं होता कि 100% सारे डिसीजन सही देगा। तो भाई ऐसे छोटी-छोटी अगर हम वो भी बोलेंगे तो वो तो कोई डिसीजन उनके अगेंस्ट भी गया होगा। तो Hiren, Hiren, just wanted to वो add, it वो wasn't ठीक offside है that. भाई। उतना आप जज करोगे तो भाई तो ये ह्यूमन वो भी बंदा Yeah, yeah, yeah. बंदी क्या बोलती कि ह्यूमन है तो इतना हुँ। And यस, and यस। I think it जिंगान was गिव्स not offside. He वो didn't. I just want to add on that Shawik's because it's not offside because the player has not attempted to play the ball. If the striker attempted to play the ball, yeah, it गोल would be offside. एग्ज़ैक्टली। But clearly not attempted to play the ball at all, so it's not offside. So the referees have been very good if you actually look आई at थिंक it. हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली उस Yeah, सपोर्ट की बात नहीं है सुमित शो भाई। द रेफरी जो काम अच्छा किया है वो बोलना चाहिए। जब गलत डिसीज़न देंगे तो वो भी बोलेंगे। तो उसमें ऐसा कोई जेंडर का उसमें वो नहीं आता भाई कि वुमेन्स है तो इसलिए। तो ये सोचते तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुनील को मिला था क्लियर चांस। दैट वाज़ द क्लियरेस्ट चांस एंड स्टार्टिंग के 2 चांस तो क्या बोलते हैं कि आपके चांगते ने लेफ्ट साइड से क्रिएट करके दिए। बाय द वे द फर्स्ट फर्स्ट वन वाज़ रियली रियली वो मतलब very सुनील good सर भी cross, मिस कर very गए good और cross. मनवीर वो मिस कर गए। आई थिंक वो कुवैत वाला चांस याद दिला दिया कि वहाँ पे भी ऐसा ही चांस बना था। सुनील सर ने आगे चले गए, मनवीर ने पीछे से आके रन बना के वो गोल किया था। वही उसी तरह का चांस था वो। दैट वाज़ अ रियली रियली गुड मोमेंट। व्हाट डू यू से राहुल? Yeah, yeah. I think if those sort of crosses, we need the strikers to be there because that was a very हुँ, good cross that he put in the first, हुँ, whatever 5 2 3 minutes it was. We हुँ, need those sort of moments in this half. That's what I'm talking about. Those kind of chances where we get crosses and we get hopefully somebody in the box. हुँ। Yeah, going to be ऑब्वियसली interesting. थापा बॉक्स टू बॉक्स वर्केट। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा फर्स्ट हाफ में कि संदेश झिंगान एंड राहुल बेके एंड सुभाशिष बोस, आई थिंक ये 3 प्लेयरों ने जिस तरह से बॉक्स में कुछ क्रूशियल ब्लॉक्स किए हैं, आई थिंक दैट वाज़ आल्सो काफ़ी ज़रूरी थे क्योंकि कुछ ऐसे शॉट्स थे कि जो मतलब गोल हो सकते थे, बट आई थिंक काफ़ी परफेक्ट टाइम पे उनके क्रॉसेस देखने को मिले हैं। सो अभी तक Hmm. तो आई आई डोंट थिंक सो कि जिक्सन की मिडफील्ड में एंड अनवर अली की बैकलाइन में अभी तक कमी खली है। क्या क्या बोलते हो? For sure, for sure. I think maybe Anwar Ali ki you will feel the difference. I felt it because his presence, sort of Rahul Beke's first thought is let me go back towards the keeper, and he doesn't have that attacking sort of output. I think Anwar Ali, that's where he would have made a difference. He would try more progressive passes, and he's very calm. But no, I mean, defensively, no doubt, Rahul Beke been brilliant. That way, I just think the only person I feel like we are missing today is Anwar Ali. That's the only thing. हुँ। आई थिंक वो लास्ट 15 मिनट में अगर हमें वो करना था कि थोड़ा-सा गेम क्या बोलते हैं कि डिफेंसिव ज़ोन से Slow बाहर down. निकलना था। देन Yeah, देन आई थिंक अनवर अली वहाँ पे काम आ जाता। बिल्कुल, exactly, बिल्कुल भाई। exactly. Very calm. मेरे में तो भाई अभी तक वही चल रहा है वो मोहन बगान का कोई पुराना मैच दिखा रहे हैं गोवा के साथ। सेकंड हाफ चलो भाई स्टार्ट होने को आया है। सिंघान इज़ लाइक अ रॉक, ही इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर इंडिया विथआउट अ डाउट भाई। अ कोटाल एंड पंडित इन वी नीड इट। आई थिंक मेरे को लगता है कि निखिल पुजारी की जगह पे मैं 68th मिनट के बाद मैं देखना चाहूँगा कोटाल को। आई थिंक वी नीड दैट डिफेंसिव Yeah, सॉलिडिटी ऑन दैट पार्ट आल्सो टू बी ऑनेस्ट। हाँ, अ, possible. मिसिंग हिंदी कमेंट्री ओके भाई।
What is your opinion about performance? I think overall a very good team performance. अच्छी अच्छी टीम परफॉर्मेंस दी हमें। आई थिंक फ्रंट लाइन में भी अगर आप देखें तो चांगते इज बिन ब्रिलियंट। मनवीर ने आई थिंक वो क्रॉसेस एंड कॉर्नर्स को डिफेंड करने में काफी इज बिन ब्रिलियंट। मिडफील्ड में आई थिंक सूर्य सपुया का उतना ज्यादा बात हम करेंगे नहीं। दीपक टांगरी डेफिनेटली क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन आई थिंक अपुया एंड सुरेश भी मतलब अच्छा खेले। आई थिंक दैट दे वर आल्सो गुड। एंड Yeah, बैकलाइन तो they're आई थिंक doing well. वो बैकलाइन में आई थिंक निखिल पुजारी एक थोड़ा सा मतलब वो लगा, बट अदर देन दैट आई थिंक एवरीवन इज गुड। Yeah, I think we just have to give the boys credit for this half. Now it's a new half. It's like they should treat it like a new game, I think, and go into it fresh. ये लॉर्ड पुनिस सुपरस्टार बोल रहे हैं कि लो ब्लॉक डिफेंडिंग इज ओनली वे टू गेट अ पॉइंट, अदरवाइज अटैकिंग करने पे बहुत जल्दी कुछ खुल जाएंगे मिडफील्ड। आई थिंक जो लास्ट 15 मिनट में हमने एक चीज राहुल नोटिस की कि जो उनका लेफ्ट साइड है यानी कि क्रेग गुडविन वाला साइड और हमारा राइट साइड है, वहां पे और भी ज्यादा स्पेसेस उनको मिलने लगे थे। और क्रेग गुडविन लगातार लास्ट के आई थिंक 5 मिनट में तो उसने मेरे हिसाब से 5-6 क्रॉसेस डाले हैं। सो वो एक Yeah, एरिया है कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। exactly, exactly. And we need the wingers to help on on the flanks. If that we need wingers to come back and help the fullbacks. लिस्टन और महेश को जल्दी लाना चाहिए। दे कैन विन सम फाउल्स, वी नीड फ्री किक्स इन देयर हाफ। ओके, चलो भाई लग गया। अच्छा, स्टार्ट हो गया क्या सेकंड हाफ राहुल? May देखते हैं। I'll just go and I'll check. अच्छा, ओके। मेरे में तो अभी तक नहीं हुआ है भाई। थापा थापा भी आई थिंक सेकंड हाफ में सुरेश वांगजाम की जगह पे दिख सकता है। चांगते वाज ऑन फायर एब्सोल्युटली भाई। ही इज आवर बेस्ट अटैकिंग प्लेयर इन दिस फर्स्ट हाफ विदाउट अ डाउट। उसमें कोई डाउट नहीं है। अ, चलो, और आई थिंक अभी तक सेकंड हाफ स्टार्ट नहीं हुआ है भाई। सागर रविंद्रन भाई बोल रहे क्या भाई? नहीं किस चीज़ के लिए बोल रहे हो आप? वो भी तो क्लेरिफाई कर दो भाई। वीपीएस विक्रम प्रताप सिंह डाउटफुल भाई, डाउटफुल। आई थिंक नोरेम मयस मैं देख रहा हूँ कि सेकंड हाफ में आ सकता है। एंड सुनील छेत्री इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू प्लेयर्स कि व्हाट शुड बी द अप्रोच इन दिस फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द सेकंड हाफ। किस तरह से खेलना है, बिकॉज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें अच्छा नॉट स्टार्टेड। नहीं, नहीं अभी अभी स्टार्ट हो रहा है भाई। अभी ईगो स्टी मैच एंड ओके, रेफरीज आर आल्सो ऑन टू द फील्ड। लॉट्स ऑफ इंडियन फैंस, वो देख के अच्छा लगा। संदेश जिंगान को देखकर लगता है कि जान दे देंगे देश के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल लॉर्ड ऑफ सुपर स्टार भाई। आई थिंक लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो। फर्स्ट 45 मिनट्स को रिपीट करो भाई एंड एक और जबरदस्त डिफेंसिव हाफ दिखा के दे दो भाई एंड इंडिया क्रिएट्स द हिस्ट्री। इफ वी गेट द at one point also that would be a remarkable achievement. And I think Graham Arnold, Australian coach, is also looking a little bit tense. Second half start हो चुका है guys. Australia with started with more intensity as expected. First 15 minutes of second half we has to be on point. कैसे भी करके भाई पूरा बस पार्क कर दो। फर्स्ट 15 मिनट में बस पार्क कर दो भाई। दे आर गोइंग ऑल आउट नाउ। दे आर गोइंग ऑल आउट। रेफरिंग इज वेरी एवरेज। हो गया स्टार्ट। चलो, चलो आई थिंक फर्स्ट 15 मिनट में ऑस्ट्रेलिया विल। अरे भाई ये वॉच स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, ओके ओके, वो हो गया। चलो राहुल बेके गुड। सब असिस्ट बढ़िया मेरा भाई। अच्छा खेला है भाई फर्स्ट 15 मिनट तू। इसी को कंटिन्यू कर। चलो, दिस इज गुड। तो देयर इज अ नो हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडिया गाइस। कोई भी हाफ टाइम दोनों टीम में से किसी ने भाई हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। बोथ द टीम्स गॉन विद द सेम लाइनअप इन द सेकंड हाफ। सो ऑस्ट्रेलिया आर लुकिंग टू होल्ड अप अ मोर बॉल नाउ। कोई नहीं, क्लोज करो। वेरी गुड बेके, ब्रिलियंट यार बेके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे यार चांगते यार बॉल विन करना भाई, फिर आगे जा भाई। हाँ, चलो बॉस, कोई दिक्कत नहीं भाई। टीवी पे कहाँ? टीवी पे भाई फ्लेमेंगो भाई डीडी स्पोर्ट एंड क्या बोलते हैं कि आपका स्पोर्ट 18-3 के ऊपर आ रहा है मैच। सो वहां पे आप देख सकते हो भाई। मनवीर वेरी गुड भाई मेरे भाई। मनवीर को भाई अब लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। चलो चलो, बढ़िया। अ, अभी तक भाई सेकंड हाफ के स्टार्टिंग से भाई बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास ही है।
इंडिया ज़्यादा बॉल विन भी नहीं कर पाई है। चलो बच गए, बच गए। देयर वाज़ अ ओपनिंग बट बच गए। उनकी ओर से भी भाई फाइनल थर्ड में उनकी भी शूटिंग भाई बेकार सी रही है। शॉट बिल्कुल बेकार से उन्होंने ज़्यादातर लिए हैं, अगर आप देखें तो। ये भी उतना कोई ख़ास शॉट नहीं था। इरविन यहाँ पे जैक्सन इरविन अच्छा कर सकते थे। सो वो भी उनके लिए एक कंसर्न रहा है। एंड जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि सेट पीसेस एंड कॉर्नर, उसमें भी उतना ख़ास वो नहीं कर पाए हैं। आई थिंक इतना ज़्यादा कॉर्नर इंडिया ने कंसीड किया, बावजूद भी एक भी आप ये नहीं बोल सकते कि क्लोज़ था। आई थिंक एक एक वो आई थिंक मेरे को याद आता है। अदर देन दैट आई थिंक एवरी कॉर्नर्स वी डिफेंडेड रियली वेल। Igor Stimac is not happy with the referee. He's arguing with the sideline referee. So it's looking like a India 5-3-2-1 formation now. मेहता सॉरी आपका मनवीर थोड़ा सा डीप ड्रॉप हो गया है। दैट वाज़ अ क्रूशियल गुड पिचिंग संधू ब्रिलियंट। कम ऑन बॉयज कम ऑन। शुरुआत अच्छी की है सेकंड हाफ की हमने। फिर से अरे ऐसी गलती मत करो यार। ऐसा बॉल तो मत लूज़ करो। अनलीश द पावर ऑफ कॉन्टिनेंटल। चलो बढ़िया। अरे, अरे! अ, अभिजीत सरकार बोल रहे ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइकर्स उनके क्वालिटी के अनुसार नहीं खेले हैं, अभी तक अच्छा है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आई थिंक दैट्स माय पॉइंट कि अब तक उनकी ओर से भी जो शॉट्स दिखे हैं, उतने ज़्यादा ऑन टारगेट नहीं रहे हैं, तो मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ये फर्स्ट स्कोर क्रॉस ब्रिलियंट भाई संदेश पाजी ब्रिलियंट। दिस इज़ द डेंजरस थिंग भाई, ये जो क्रेग गुडविन के साले एक क्रॉसेस है ना, इसको भाई कैसे भी करके इंटरसेप्ट एंड रोकना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया लुकिंग नाउ मोर डेंजरस भाई इन दिस सेकंड हाफ। वी नीड टू बी गेट टुगेदर एंड डिफेंड वेल। ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अरे ये क्या कर दिया? बैंट खा लिया। अरे यार! शिट यार! अरे यार! Deadlock has been broken guys and India considered that goal जो कि मतलब हाफ टाइम पे मैं बार-बार रिपीट करता जा रहा था कि फर्स्ट 15 मिनट ऑफ सेकंड हाफ विल बी द मोस्ट क्रूशियल एंड उसमें क्या बोलते हैं कि आपको फुल ऑन बस पार करना है। अरे यार! दैट वाज़ अ रियली बिग ब्लो यार! We should have defended that, but Nikhil Pujari can't do that much. यही जो जिसका डर था वही हुआ साला। साला सेकंड हाफ के यार क्या हो जाता है हमको, फर्स्ट 15 मिनट में यार ऐसे हम क्या बोलते हैं कि कोई नहीं गए गाइस गेट टुगेदर। अभी भी टाइम है मैच में ऑब्वियसली 40 मिनट लेफ्ट इन द मैच एंड बढ़िया रन, चांगते का बढ़िया रन, भाग ले मेरे भाई चांगते। अरे यार! शिट! इश्यू विथ गुरप्रीत। ही शुड हैव यू कैन से कि क्लियर दैट गोल बेटर वे। मतलब एक मौका बना के दे दिया। पंच अच्छे तरीके से करना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली he didn't able to do that and we considered that goal. कोई नहीं कहीं नहीं गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डिफेंड वेल। 1-0 से भी अगर हारते हैं तो दैट्स आल्सो अ गुड थिंग फॉर अस बिकॉज़ द द द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको वो जो है वो स्कोर लाइन को काफ़ी ज़्यादा वो रखना है ताकि अगर आप सीरिया के सामने मैच निकालते हो सो देन यू हैव अ रियल चांस टू गेट इनटू द राउंड ऑफ 16। सो वी नीड टू डिफेंड वेल। जस्ट one goal guys, just one goal. Craig Goodwin again going to take that set piece. चलो भाई बढ़िया,
बढ़िया। गुरप्रीत नॉट गुड। आई थिंक गुरप्रीत थोड़ा-सा नर्वस दिखा है फर्स्ट हाफ में भी वो एरर किया था 1-2 एरर एंड इस हाफ में भी ही शुड हैव यू कैन से कि क्लियर इट बेटर वे। एंड उसके हाथ से डिफ्लेक्ट होके गया भाई वो एंड निखिल पुजारी कांट डू एनीथिंग। सो कोई नहीं, फोकस, फोकस। अपूया कम ऑन। वेरी गुड गेम प्ले। अरे यार! अरे यार रेफ क्या यार चांते को होल्ड अप किया यार। Igor Stimac looking really furious now. We shouldn't concede more than 2 goal. Exactly bad board भाई more than 2 भी नहीं भाई एक ही कंसीड करना है बस अब हो गया। अब डिफेंड करो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई भले कंसीड कर दिया डिफेंड करो। चलो बढ़िया। कोई नहीं। अगर इस वेरी गुड सुनील छेत्री। ब्रिलियंट। दिस इज व्हाट वी नीड। वी नीड दिस इंटेंसिटी, वी नीड दिस पैसिंग। मलेशिया मैच में वो ओवर कॉन्फिडेंस था। कोई नहीं चलो। डिफेंड वेल गाइस। ये लेफ्ट साइड पे यार स्पेस मत बनने दो भाई। कम ऑन। डिफेंड वेल गाइस। स्पेस मत दो। अरे यार स्पेस मत दो। मर गए। बच गए। ये मरे। अरे बच गए। सो फाइनली सर डेडलॉक ब्रोकन और जो सेकंड हाफ के फर्स्ट 15 मिनट में एज एक्सपेक्टेड हमारा जो रूटीन रहा है कंसीड करते हुए। बट आपको नहीं लगा कि आज गुरप्रीत सिंह संधू थोड़ा-सा नर्वस दिख रहा है मतलब अबाउट हिज डिसीजन मेकिंग? I think the goal was a lack of coordination. उसके पीछे तो निखिल पुजारी था. Might have left it for him. And what I found interesting is Jackson Irvine as captain has been sort of the guy who's been trying to put the pressure in the first 5-6 minutes. Huh? Even now again, header Jackson Irvine. So so the point here is again captain of St. Pauli in fighting for Bundesliga promotion in Germany, quality player. You see what a difference he makes, and India now has to be careful. Because I was just reading up a few things, and I was also listening a little bit of the global feed and the German feed. Again, we as Indian fans are happy with the first 45, but everyone outside is saying it's just a question of when is the goal going to happen, and that is something, that's the danger now, because we become even more defensive. If you look at it, the first 10 minutes, Changte was running once forward, never had a chance to get the ball. Otherwise, we're all in defense. We're all in our own half, and that's the biggest problem. We're falling back too far. We now बैक फाइव बेसिकली बैक फाइव बन गया है। मनवीर भी आप देखो पूरा वो मतलब निखिल पुजारी के साथ वो चला गया है। फिर भी आप and Goodwin is getting too much of space. I think maybe a substitution Kotal for Pujari, I think makes sense. Maybe so that would make sense in my opinion, because I think Nikhil Pujari is struggling. बट आई थिंक इंडियन प्लेयर्स को अभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक 1-0 फाइन। आई थिंक अगर 1-0 से भी हम हारते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल कि अगर हमारे 3 पॉइंट आते हैं तो हमारे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक rather than thinking about too much. See, yes, on the other side, our coach has been talking about the development of Indian football. The result is fine. But look at what we're playing at the moment. We're totally outplayed. We have to be honest about that. We are totally being outplayed.
This is not even a contest, and this is like a cup game, like a fourth division team taking on a first division team, and that's the worry now, no? That is when will the Aussies really get their chances, and that's the. अरे यार ये ऑस्ट्रेलिया का वो यार थ्रो वो क्या था, फाउल था। क्लियरली भाई वो ऑस्ट्रेलिया का वो था, इंडिया का थ्रो इन बनता था। कोई नहीं, लेट्स सी। आई थिंक आफ्टर ये 60th मिनट सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ एग्री कि निखिल पुजारी की जगह पे प्रीतम कोटाल को लाना चाहिए। Very well, Manvir. Nikhil Pujari is brilliant, by Manvir, brilliant. Giving too many space to Goodwin on that left Yeah. space. But Goodwin is starting to play football. Huh? You see the crosses are getting better. That's the concern. चलो, Duke, good done, Rahul very Beke. Corner. very good block. आई थिंक साइडलाइन में कोई दिखा तो नहीं रहा है कि सब्स्टिट्यूशन अभी तक टीम मैच एक्सपेक्ट कर रहा है, सो लेट्स सी। I think 65-70 minutes is going to be when you will think about making a substitution. It's quite interesting, huh? When Manvir, who's actually tall, stands to Harry Suter, he's still one head shorter. हैरी शोतर की तो आई थिंक 6'6" होगी, कितनी है उसकी हाइट? 6'6", 6'7". हाँ, बच गए। Another collision between Gurpreet and Sandesh. Harry Suter. Oh, on the face. No, who is this? It's Shubhashish Bose. Bose. That was a brilliant ball win by Sandesh Paji. देखो हेडर कैसे डिफेंड, गोल पोस्ट फुल ओपन। Sandesh is not happy now. minutes gone. Score line is 1-0. ये गुरप्रीत क्लियर भी ये बेटर तरीके से कर सकते थे जो गोल उन्होंने कंसीडर किया, पंच आउट, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्लेयर प्रेस भी, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर प्रेस नहीं कर रहा था। अरे यार बढ़िया, कम ऑन। अरे यार अब भाई आगे का सोचना होगा और नेक्स्ट 2 मैचेस में कुछ रिजल्ट आना ही होगा, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। Sorry. बट अभी, अरे नो प्रॉब्लम सर। बट भाई अभी अभी इस मैच में भी अभी आधा घंटा बचा है, सो वी ट्राई टू बी, क्या बोलते हैं कि जितना कम गोल खाए, दैट वुड बी
Good Yeah, we for need us. to, but we now need to change a little bit of strategy as well. No? We need to try and get Hmm. onto the counters. We need to do something. Australia with 2 substitutions. Two Interesting. substitution. I think क्यूशिन तेंगी उसका नाम क्या है वो आ रहा है शायद या फिर सिल्वेरा आ रहा है. Silvera, yeah. Samuel Silvera is coming in. Silvera, and was it Aidan O'Neill? I think. Eden O'Neill, yes. I think in place of Bekos maybe. No, sorry, McGree. Okay. Riley McGree. McGree and Silvera. Boyle is off. Okay. Samuel Silvera. So the 2 guys from Middlesbrough now coming on. Middlesbrough, of course, this week won against Chelsea. Yes, that's a big result. Huh. But no, as per the Chelsea's condition right now. And Metcalf. Metcalf didn't have the best of games. So I think they're changing something tactically, strategically as well. So 1 midfield and 1 forward line substitution. Silvera has a very good pace. Good ball. Oh, luckily out. No? Rahul, cool. बाहर नहीं चला गया था क्या वो? Looked like it, but रिप्ले में भी पता चलेगा. at the moment, the worrying part is complete domination by Australia. ऑस्ट्रेलिया हाँ सेकंड हाफ कंप्लीटली मतलब क्या बोलते कि 360 डिग्री टर्न. सेकंड हाफ में भी not able to do anything. So the interesting part is at the moment live stats 73 to 27% of ball possession for Australia. 19 to 3 shots, 3 to 1 on target, and now one duels was 50-50 at the break. It's now 55-45. So Australia clearly dominated the first 20 minutes of the second half. Rahul, Varshish boss. क्या यार boss बच गए चलो. Now we have to be careful. टाइम लो गुरप्रीत यार थोड़ा सा. कम ऑन अरे यार चांगते कम ऑन. अरे यार रेन मैथ्यू ने भी मिस्टेक की थी बट अनफॉर्चुनेटली यार रिकवर कर लिया. थोड़ा सा बॉल हमें रखना पड़ेगा अभी. थोड़ा सा आई थिंक भले ही हमारे हाफ में बोल रहे लेकिन थोड़ा सा यार बॉल रखो यार. Rahul is also back. So Rahul completely मतलब second half completely opposite. What do you say about the first 20 minutes? Yeah, but I think the thing is again we can't make mistakes in keeping error. And they're spraying the ball around. Gurpreet, Sandesh, very important. The strategy is sir कि राइट बैक को उनके यहाँ पे आपने देखा पिछले 5 मिनट में 2 बार उसने क्या बोलते कि ओवर दी बॉल डाला है टू दी क्रेग गुडविन. Yeah, been asked to play the diagonal ball, no? And the ball comes to the player, huh? But I think the most important player at the moment is Captain Jackson Irving. Looks like Akash Mishra is coming on. यस भाई उज्बेकिस्तान वर्सेस सीरिया का मैच देखेंगे भाई बिल्कुल देखेंगे. देखना भी पड़ेगा भाई बिल्कुल. Why not? Deepak Tangri trying his best. But the question is if Akash Mishra comes on, does it mean that Shubhashish goes off? Interesting. Yeah. Because I would have rather said, that Nikhil Pujari is the one that... Yeah.
So is it India going offensive now in this last 25 minutes? Maybe. Ah, he's way off. Oh yeah. Oh, he's on. Oh, he's offside. Are you sir going for the Uzbek game? Looks unlikely. Maybe for the Syria one. Okay. It's interesting also to see Suresh way further down the field. Hmm. You guys On think the it's time for Mahesh? अरे यार offside यार मनवीर यार. if I bring in Mahesh, I have to take off Changte. The problem with Manveer is I need his height in my defensive corner situations and free kicks. That's your Yeah. problem. I mean, you can't put a Mahesh against a Harry Suter. Then though you can say, "Bhai, stay away. Let Harry Suter take it on his own." Ooh, the ball almost went into the net. Mistake. I think Matt Ryan mistake. I'm not sure who it was. आर्सेनल का बंदा है यार, बोलो उसको एक आध ऐसा फंबल बम्बल करे यार राहुल, चांस दे God. इंडिया को. I think he played what 3 games for Arsenal, 2 games or something. That's why he's a good that's why he's a good goalkeeper, no? क्या तुम्हारे में राहुल क्या टाइम अच्छा. स्क्रीन चल रहा है? 69 just started. So I mean, we're into the 70th minute. So 69-0-0. अच्छा 30 सेकंड आगे हो फिर तुम भाई. Ooh. If that Now went in, it would have been quite funny. हाँ, फनी. Yeah. ये हो जाता है, ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं बड़े मैच में. Yeah. सो पॉसिबिलिटी. Graham ये देखो ये Arnold is- लेफ्ट फ्लैंक पे यार कितना स्पेस दे रहे हैं हम, पूरा खाली पड़ा है भाई एकरों की तरह. And it's very interesting to see, no, that in the first half the Aussies were playing a lot on their right. Now they're playing nearly Right. completely on the left. लेफ्ट. हाँ. But you saw Matt Ryan knew the ball is not going in. No? Otherwise, he would have jogged differently. He was literally jogging. And the Aussies are now wanting India to come up so that they have a little bit more space. Huh? Yeah. Yes. Do you guys think we should just let this be and just play out a 1-0, or should Yes, we yes. probably... For I'm going to be really happy if the scoreline is 1-0. थोड़ा सा गेम भी अब स्लो कर दिया है उन लोगों ने. मतलब जो फर्स्ट सेकंड हाफ के फर्स्ट 10-15 मिनट्स में जो इंटेंसिटी थी उसको पूरा उन्होंने ड्रॉप कर दिया है अभी. सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करा ये? मतलब एक आकाश मिश्रा वो हो गया. नहीं, आकाश मिश्रा भी हो गया क्या? नहीं हुआ ना अभी तक. नहीं. हाँ. वेरी गुड भाई सुभाशिष. टेक होम 1-0 स्कोर. हाँ एग्री भाई. अरे यार जानते surprisingly 70 minutes gone and there is a zero card till now. बेके यार बच गए भाई. बेके साहब क्या कर रहे हो मेरे भाई? Two more ठीक ही changes है. for us. Yeah. It was fine what Rahul did. Craig Goodwin's off. And Mitchell Duke's off. So 4 substitution done then ना from Australia side. Yeah, therefore done with 4. We need to change. चलो Goodwin is going out and Jordan Boss youngster very good left Bruno back. Fornaroli, the man from Uruguay. Fornaroli, Uruguayan player. 2-0. That's quite easy. Oh. So
come on, yeah, substitution. Was it Jordan Boss? And Yeah, Sandesh is bleeding. खा गए बच That is what you call a good substitution, huh? again I would question Igor Stem's substitution. I think this mistake is making again and again. I have seen this mistake in Iraq game, in Lebanon game, in Kings Cup also. I think his substitution is quite late, to be honest. Well worked goal, huh? yeah, it was a good goal. Well back. Mm. And now India has to be careful, huh? 1 India minute has to of be very, very careful that you don't concede another 2-3. He's bringing the changes now. हम्म। Akash अब and क्या अब मैं सच बताऊंगा। अब अभी अभी जो वो रन बन रहा था ना राइट साइड पे, मेरे को वाइब आ रहा था ये सेकंड गोल खाने के बाद ही ईगो स्टिमिच सब्स्टिट्यूशन करेगा, और वो इवेंचुअली हो गया साला। I said 65 to 70th was sort of would have been ideal, and आइडियल टाइम, especially हाँ। ideal, and it would have been. And again, सेकंड हाफ भाई विशाल भाई, वी आर कंप्लीटली awful. You can't say कि we played any good football in second half. Suresh is off. Okay. Liston Colasso and Akash Mishra. Liston Colasso as playmaker, and Shubhashish is off. So Liston comes on as a 10. Okay, Yeah, that's looks an like interesting. This is an interesting substitution. Let's see where Liston Colasso himself has position. He's playing in the middle. He's playing behind. yeah, he's playing as a Yeah, 10. Playing as a 10. 10. I think those long rangers will be now required from him. We can't concede another one. But I think Yeah, but we've got 15 minutes plus X to play. Now it's again, it's the same thing what happened to Lebanon yesterday, na? The problem is the gulf of standard. No, you saw, no? 45 minutes we fought. Let's say first 15 minutes we played. 45 minutes we played well and fought well defensively. But then the first 15 minutes of the second half reminded me of Mumbai City at Navbahar. They were totally outplayed. And that is the problem. Yes, अनुराग भाई वो क्लियर कर सकता था भाई वो। I think Suresh is not all close to Jackson. But Suresh was playing as a 10 today. Yeah, exactly. So that comparison is wrong. And the question is, if what would have Jackson done more than what let's say Deepak Tangri did today? Yeah. These are pseudo discussions, guys. It's like criticizing the referees. Why are you criticizing the referee? You're so used to criticizing people about these things. Criticize the people who should be criticized, not people for the sake of criticizing. नहीं, गेम तो अभी देखिए 76 मिनट हुआ है, गेम अभी तक क्लीन चला है। सच कोई आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के अगेंस्ट इतने कोई बड़े डिसीजन दे दिए इसलिए हम 2 गोल कंसीड कर दिए। तो दोस टू आर टोटली क्वालिटी गोल्स फ्रॉम देम, एंड फर्स्ट गोल में आप बोलेंगे कि हमारी मिस्टेक थी, सेकंड गोल वाज ब्रिलियंट फ्रॉम देम। उन्होंने फायदा उठाया, राइट टाइम पे सब्स्टिट्यूशन किए। हमारे प्लेयर थके हुए थे, दे डिडंट एबल टू कैच ऑन द राइट फ्लैंक, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट क्रॉस एंड गोल। So simple as that. They come up with a plan and they execute it. Simple as that. I still think 2-0 loss is not that bad. अभी मैं भी वही बोल रहा था बात गोट पे कि 1-0 is I'm ready to accept. Now it's 2-0 and still there is a 20 minute left. 15 plus I think 5 minutes injury time, 4-5 minutes. So there is another chance we might concede one.
Deepak Tangri down, not good. Yeah, doesn't Not look good. good. I Deepak think Tangri, I think one of our best today. There they show the goal again. Yeah, too easy. then Manvir Thapa. was I sleeping, think Thapa now option is the Thapa. most probably. गोल जॉर्डन बोस ने मारा ना ये Hmm. यंगस्टर 21 year old Plays in Belgium for Belgium. Westerlo. Yes. All their players are in European leagues. Except Craig Goodwin. क्रेग गुडविन मिचेल ड्यूक भी ये जे लीग में है बट Hmm. yes Anirudh Thapa But is this, coming up. but this is all. This Australia is nothing compared to the 2011 Australia. 11 हाँ Australia was 100%. that was a different class Australia. This is ये सच में सर ये मतलब भले इंडिया के सामने जीत जाए लेकिन मेरे को इस टीम से वाइब नहीं आती कि एशियन कप जीत सकती है टू बी ऑनेस्ट. no. आई थिंक जापान साउथ कोरिया एंड ईरान आर मच आई वुड से सऊदी अरेबिया भी मेरे को इससे स्ट्रांग लगती है. आई थिंक हाँ. सऊदी अरेबिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया. Good one, अरे good play. यार मनवीर वेरी गुड गुरप्रीत पाजी. आकाश भाई दिखा दे अपनी थोड़ी सी पेस. निकल गई हो अच्छा. सोच रहे थे बस डिफेंस कर लेंगे मैं. अरे भाई वो तो पता ही था भाई यू कांट डिफेंड 90 मिनट. इंडिया डूइंग बेटर. कहाँ कौन सा मैच देख रहे हो विजार्ड भाई सेकंड हाफ में कहाँ Free kick on the No, edge but of the box. but the point is for us very simple is you see the difference in this game. Huh? This is Hiren, you're very right. This is not a top top Asian side. It's a good quality Asian side, but it's not a too easy Apuya. And अरे यार yeah. But again, we're doing better than 2010 or 2011. Yeah, but 2011, that Australian team was of a different level. Harry Kewell and those guys, Neil at the back, Mark Schwarzer and goal. They were top players in the Premier League. I mean, their captain Harry plays in the second Bundesliga. And still they're miles off. This is, again, we need to talk about realities. The result is good, but the way we played, terrible in the second half. We didn't play football. Did we play football in this 35 minutes? सेकंड हाफ कंप्लीटली वी आर ओफुल. वो तो एग्री वो तो आई थिंक उसमें कोई वो वाली बात नहीं है. Kevel my god was rocking the Premier League then when we played them in Exactly. 2011. Exactly. Bruno बच गए ना Fornaroli. फ्री किक में. राहुल फ्री किक में बच गए ना. हाँ, तो Good save by Gurpreet. Because good my save. concern is in this second half, there is no intent of trying to create something. Not Something. even nothing. Zero. Cahill Dunn. Yes, 2011 is different with player like Kevel, Emerton, Cahill Dunn. Yeah, different team. Now Aidan O'Neill comes on. नहीं है सक्सेस जोन भाई. इट्स नॉट अबाउट द स्कोर लाइन. इट्स अबाउट द गेम प्ले एंड क्वालिटी आपकी कितनी इंप्रूव हुई है. वो ज्यादा मैटर करता है. आप क्या गेम में भले ही स्कोर लाइन होता लेकिन आपने कुछ चांसेस क्रिएट किए होते. वो दिखा था कि हाँ भाई आपने भी गेम में थे. जैसे फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग 15-20 मिनट बोलेंगे कि हाँ भाई अभी हमारी जो लिमिट है ना टॉप टीमों के सामने वो वही है. 10-15 मिनट पूरे 90 मिनट में से हम अगर आप पूरा निकाल के देखेंगे तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम अच्छा कर पाते हैं. अदर देन दैट वी आर नॉट एबल टू यू कैन से कि doing something.
सो वो उसको बेटर करना है भाई। स्कोर लाइन तो भाई मैं फुटबॉल में कभी भी ऐसा हो सकता है, आज 1-0 से भी मार सकते हैं, यू नेवर नो, वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन द क्वालिटी एंड द गेम प्ले कि किस तरह से हमारे प्लेयर टेक ऑन कर रहे हैं, किस तरह से गेम में वो कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो इम्प्रूवमेंट दिखाएगा ना भाई, स्कोर लाइन थोड़ी ना इम्प्रूवमेंट दिखा देगा। फर्स्ट हाफ वाज़ टू गुड फॉर इंडिया। फर्स्ट हाफ में भी भाई थोड़ा-सा मैं बोलूँगा, मतलब ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि हम लकी लकी भी थे, एंड क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया वर देयर फॉरवर्ड्स, और यू कैन से कि जो उनकी जो Finishing. फिनिशिंग Finishing है was वो disastrous. ऑफुल, 14 हाँ, ऑफुल। chances. 14 chances in a half. हुँ, That speaks its own language, na? हुँ। कि भाई उनके पास प्लेयर के सामने हम बच्चे दिख रहे हैं। फिजिकलिटी एक इम्प्रूव हुई है, सक्सेस जोन भाई, उसमें मैं कोई डाउट नहीं मानता हूँ। आई थिंक इन दिस लास्ट 10 इयर्स आपके प्लेयर लगातार मतलब प्रोफेशनल लीग खेलने से वो एक इम्प्रूवमेंट आया है, कंपैरिजन टू 2011। देखो नचा रहा है साला वो But the लेफ्ट point फ्लैंक is, पे। Australia is a better football team than it was in 2011. Na? Football has changed over the last हुँ, 10, 12, हुँ, 13 years. Na? That is also visible. Australia in those days used to play classic English football. हुँ। And खा we लिया क्या also तीसरा भाई? realize, बच गए। Sunil is trying everything, but this is disappointing to see that. थापा, ओके। मनवीर, सॉरी निखिल। फर्स्ट हाफ जिंगान के लिए बच गए। Jingan, Beke, even Shubhashish Bose, फर्स्ट Tangri. हाफ में तो हाँ, उन सब का Yeah, we डिफेंसिवली gave them a we gave them a fight, but that's not enough. Luckily, they Listen, finished. good bit of skill. Could have played it wide. He shoots from 40 yards out वही तो दिक्कत on है। his left. On his left. Just keep the ball moving there. Because you're not confident enough that that you will find someone and create something. That's then the lack of confidence in your own attacking instincts. But Australia did not trouble Gurpreet in the first half. They had chances, no doubt. We defended those corner like a boss, at least most of them. But that is again, defending is one thing. The real problem is also that these teams are not as good at their finishing. Look at Qatar against Lebanon yesterday. Qatar could have scored 7. They could have scored 6, 7 against us in Bhubaneswar. That is the thing, na? And then you see when these teams take on better teams in world football, that where we lack in finish. Asia lacks in finishing. Hmm. Now is take the 2-0 and go home. That's the best that we can do now. Don't concede in the 90, 91st or 92nd or 3rd. Hmm. Good टू one नील from पे आप Lokesh. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। You realize that Australia really lack a out and out striker. Hmm. Look at this team. If we're playing the South Koreans with the Yunmin Son, Missing Jason Cummings. that would have been really sad, huh? If Jason Cummings played his best match in 6 months against India in the Asian Cup, if he was playing today, that would have been. Then the Mohun Bagan fans would have gone even more crazy. Not only Mohan Bagan, then I think all the Indian football fans will क्या बोलते कि गाली दे दे के उसको वे वो कर देते।
when we hold Uzbek looking at this performance. उज़्बेक की बात करेंगे, बाद में करेंगे। पहले ये मैच तो खत्म होने दो। उज़्बेक के लिए भी 5 दिन बचे हैं। पूरा 5 दिन वही करना है। उज़्बेकिस्तान क्या कर सकते हैं? Uzbekistan to me is stronger than Australia. So, bhai, let's not even get into that conversation. And I'd like to see who of this team is third. Almost. Okay. ऑलमोस्ट वही वो ठीक है। थर्ड हो तब भी बोलना राहुल तुम। Almost as in it was destined for a third. अच्छा. अरे ऐसे तो अभी पूरा सेकंड हाफ ही ऐसे चला है राहुल। सारे गोल डेस्टिन के लिए ही गए हैं। Oh, boss. अच्छा बोस, Ponarolli. जॉर्डन बोस। Mahesh Chetri is off. Changte is off. Vikram's on. On to the next as good as new. बिल्कुल अनुराग भाई। कल भी मैंने Mahesh. बोला था जिस जॉर्डन बोस इज अ वेरी गुड प्लेयर साला। गाली क्यों दे रहे हो उसको? गाली का भी साला वाला। हाँ, बांग्ला में गाली होता है। अच्छा, आई डोंट नो दैट। Very bad. You don't know the football language of India, which is Bangla? No. There are Ask Shayan. I will not comment, otherwise there will तुम्हारा be Bengali fan base gone. Oh God. चलो भाई कर लो अब। कितना इंजरी टाइम मिला राहुल? 3 to 4 होगा. Not yet. 3 to 4, most probably 5 होगा. Yeah. सुनील छेत्री की जगह पे कौन आया सब्स्टिट्यूशन में? So Sunil and Changte off, Vikram and Mahesh on. Okay, that's an interesting one. Vikram as striker. नहीं, Vikram playing on the left or central? As a weird hybrid striking position it is. So there is a Liston, क्या बोलते कि मनवीर, Nore Mahesh and Vikram. Four forwards are there. Apu and Thapa as a midfielders. Okay. 6 minutes. This is a क्या बोलते कि 5 कितना 6 6 minutes. ओ भाई साहब, सेकंड हाफ में तो ऐसा कुछ ऐसा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही हुए हैं, उसके अलावा तो कहीं पे भी मैच रुका नहीं है। टॉप गोल स्कोरर भाई अली 9 एफसी एशियन कप 2019। अच्छा 6 minutes injury time. India need to defend in this 6 minute. It's very difficult, no? They're not, the Aussies are even under pressure able to hold on to the ball, huh? You know, you're talking about this physicality part, ठीक है, physicality ठीक है ना, but if you're unable to get to the ball, oh, very important. Oh, आकाश बच गए भाई। संदेश पाजी ने भाई आज पूरा मतलब क्या बोलते कि वो गया है। अरे यार आकाश क्लियर कर यार, फालतू में चांस दे दिया। and that was a typical Vikram. Foul on Harry Suter. विक्रम के धक्के से हैरी सोतर वो नीचे गिर गया। Yeah, but he hit his legs, na? I just clipped ऊपर him. वाला नहीं. He clipped him at the bottom. That is the thing. ऊपर में he touches him, he won't even. So.
She's not going to give a अच्छा, card, huh? So that's a good one, huh? good one. Zero card produced in this Huh? whole match. Manvir has been asking for a card in the second half. I think it's the third foul, no? Hmm. Uh, But as good as the first half was, I think the gulf of standard you see in the second half is scary, huh? hmm. If one is honest. Yeah. Yep. वो तो सर ये मतलब एशियन कप से वो है इसलिए वो तो हमको पता ही है वो ऐसे कोई इम्प्रूवमेंट वो नहीं है बट Pata hai. पता है That is my हाँ question. पता है Does the हाँ general पता है public of this whole hype around Indian football लोगों को पता है where we stand Asian football में? That would be my आई थिंक question, भाई. द थिंग इज कि हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस तरह से देखना है कि किस तरह से हम थोड़ा सा और हाइप कर पाए इंडियन फुटबॉल को बाकी ये इम्प्रूवमेंट वो तो हमको पता है कि वो कहाँ पे हम खड़े हैं No, but hype is nice. I mean, my question is the hype that is there. And you now see the stadium. Huh? The stadium was full. Huh? The stadium is now empty. Most of the people have gone. That's the question. Will these people come back for the Uzbek game? फिर इंडिया से कौन एक्सपेक्टेशन रखना ही बेकार है फर्स्ट गोल वाज अननेसेसरी Yeah, but unnecessary and all is relatively easy to say, no? But under pressure, at some stage, you make mistakes. Oh, and Vikram gets the first yellow. Yeah. अरे यार फर्स्ट I think कार्ड it's ऑफ द मैच I think it's his debut, no? yes his debut yes I think a little over motivation of trying to prove something. But this is one of the players of the future. I think Vikram, if given time, nurtured properly, could be something. Huh? Yeah. And they're laughing. Why is Igor Stima, Mahesh and Trevor Singh laughing? You're losing 2-0. राहुल गोल नहीं खाया है ना Don't know what Thapa is doing there. Though. Vikram has to be. No, that was Mahesh. Luckily. Hui. कैसे नचा रहा है दो दो तीन तीन बंदे के भाई वो नचा रहा है What is this? It's like everyone is shooting. Yeah. Cheh. कितने बार ब्लॉक चार 5 बार भाई 5 बार ब्लॉक दिस इज मॉकरी यार दिस इज मॉकरी टू बी ऑनेस्ट They're checking for a penalty. हाँ ऑब्वियसली चेक होगा वो कितने रिबाउंड हो गए And I think they can check 3-4 times for a penalty. This is absolutely mockery. Never seen so many blocks together. Yeah, no penalty. Yeah, because the arm is on the body, I think. No? ग्रेहम आर्नोल्ड देखो एक और ऐसे देखो हाथ हिला रहा है कितने ब्लॉक हुए पता ही नहीं चले 4-5 and that is yeah. मोए मोए हो गया बिल्कुल आर्यन भाई मोए मोए मोमेंट था वो that was a perfect मोए मोए मोमेंट close range shots cannot be handball Yeah, that's too close. It depends on yes, can be, but it can also be depending on if there is an active movement even in close range. Sometimes penalties can be given. Yeah. So again, every situation has to be dealt with. Not yet. Yeah, full time. 6.5 मिनट अच्छा ओके सो इंडिया लूज बाय 2-0 goal score line and first half only you can say कि थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं second half we have been really awful
there are some decision also from Igor Stima's side. So substitution I think थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लेट किया. What's your opinion Rahul about that? एंड इसको पहले मैं यहाँ पे बता दूं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसको दो दो पार्ट में हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. 10 मिनट ही करेंगे फिर, क्योंकि हमें रात को 9 बजे भी करना है. सो वहाँ पे ज्यादा बेटर वे में वो करेंगे. लेकिन द ओनली थिंग इज कि हम यहाँ पे मैच के मोमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, रात को डिटेल में करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू यू राहुल, सेकंड पार्ट में हमने क्या गलत चीजें की कि 2 गोल. To be honest, I think this football is a game of such fine margins. Keeping mistake from Gurpreet, if that doesn't happen, anything can happen. That's the thing. So it starts with that, and after that, it sort of asks India to come out and be a little bold, which I don't think we really did. So to be honest, not the greatest second half performance, but if that Gurpreet error doesn't come, then anything can happen, because we don't know if the Australians are going to take their chances. We don't know, anything could have happened. So that's the unfortunate. but the Rahul, the thing is in second half is कि हम सेकंड हाफ में कंप्लीटली आउट परफॉर्म हो गए. मतलब फर्स्ट हाफ Yeah, में I हमने completely agree. डिफेंसिवली भी थोड़ी अच्छी फाइट की. सेकंड हाफ में आप Yeah. डिफेंसिव, आप ऑफेंसिव तो कोई आपने चांस बनाया ही नहीं है, एंड डिफेंसिवली Yeah. भी यू लुक क्या बोलते हैं कि स्कैटर्ड. आपके प्लेयर की पोजीशनिंग देख लीजिए आप, जिस तरह से सेकंड गोल भी आपने कंसीडर किया. सब्स्टिट्यूशन जो थे ईगो स्टेमिक के, मेरे को लगा कि काफी ज्यादा लेट किए उन्होंने, जबकि Yeah, that's ऑस्ट्रेलिया the 1-0 से आगे थे. दे मेड 4 अर्ली सब्स्टिट्यूशन एंड उसका इम्पैक्ट भी उनको दिखा. जॉर्डन बोस ने जिस तरह से आके इम्पैक्ट डाला, सेकंड गोल आप देखिए जिस तरह से हुआ, उसके बाद बेहतरीन चांस बनाया. सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट थिंग? No, for sure. I think the substitutions did come late. He probably could have gotten a couple of players a little earlier. Legs are always an important thing, because we're speaking so much about intensity. Can India keep this intensity up for 90? We can't. So substitutions are helpful in those situations. So we need players to come in probably at around the 60-minute mark to help out. But that didn't happen. So yeah, the substitutions definitely came a little later than should have. So Anwar sir, what's your opinion about the second half and overall game? I think it shows where we stand in Asian football. I think the second half sadly showed that we are far away from the top of Asia. And that is something. Yes, we can talk about the mistake that Gurpreet did, but again, I think after so much of sustained pressure, it's, our coaches said multiple times, yes, we can take home. The result is good. I think that's the only thing, and that has worked for him over the last few months, in the sense of when we played stronger opposition, that we never get thrashed. But the second half performance is not acceptable. Sorry, that is not acceptable for an Indian team. You are totally outplayed. Second half तो completely उसमें. I mean, if this is one of the best matches I've watched in defending all, what do I say about the second half? They were toying with us. We can only thank the Aussies that they're so bad in their finishing, even in the first half. So who are we fooling? Who are we fooling by saying that this is a good performance? नहीं, सेकंड हाफ तो कोई नहीं बोल सकता कि हमने मतलब क्या बोलती कि अच्छा खेला है. हाइब्रिड भाई, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि गुरप्रीत सिंह ने मिस्टेक की इसलिए हम हार गए. आई थिंक नो डाउट वो अच्छे क्लियर कर सकता था, बट ठीक है. मतलब ये तो रोज का है, फर्स्ट हाफ अच्छा खेलो, बट दैट इज द आर्यन भाई, ये ऐसा क्यों है कि हर वक्त हम फर्स्ट हाफ अच्छा खेलते हैं या फिर पूरे मैच में 20-30 मिनट हम अच्छा खेलते हैं? क्योंकि दिस इज अवर लेवल. अब आप क्वालिटी साइड के सामने आप जब भिड़ते हो, तब आपको ज़रूरत है कि आप अब सिर्फ 15-20 मिनट अच्छा खेलने से आप नहीं जीत सकते. यू नीड दैट 50-60 मिनट गुड मिनट्स, देन आपका कुछ चांस बनेगा, कुछ कर सकते हो. अदरवाइज़ आप हर वक़्त ऐसे ही स्कोर लाइन से हारोगे. एंड द ओनली पॉजिटिव, आई थिंक सर ने सही बोला कि स्कोर लाइन, कि हम 2-0 से हारे, एंड वो हमारे लिए एक फेवरेबल रिजल्ट है इन अ सेंस कि हमारा जो जीडी है, वो मे बी अगर आप उज़्बेकिस्तान या फिर सीरिया के सामने आगे कुछ जो भी सिचुएशन बनता है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. सो दैट्स द ओनली गुड पार्ट. रियलिस्टिकली इट्स अ गुड, हाँ, बट रिजल्ट आप बोल सकते हो कि अच्छा रिजल्ट है. सिद्धार्थ मिश्रा भाई, कौन ने भाई, नेगेटिविटी की बात नहीं है, हम मैच जो हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं. उसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं. ऐसा नहीं है Reality, कि that's इसे not यहाँ पे negativity, नेगेटिविटी it's फैला. reality. हाँ, I don't live in हाँ, a dream world. हाँ, We need to wake up to these हाँ. realities. People will sell this as a success.
Look at और the वो second भाई जो half. The हाँ, second half, the second half was terrible. We were not in the game. We were running after the ball. We didn't even get to the Australians. What are we और talking about? इसको आप We भाई were दो nowhere दो in the पार्ट game. में Where were दो we? Where were we? Come on, guys. Don't fool yourselves. If you want to think this is a success, then let's shut it down. Really, this is not success. ये देखो इसको आप अब 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो ओनली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि आप जो राउंड ऑफ 16 में जाने का सपना देख रहे हो, उसके बेसिस के हिसाब से आपके लिए रिज़ल्ट पॉज़िटिव है, इन अ सेंस 2-0। बाकी अब गेम प्ले वाइज़ आपकी आपकी टीम ने टक्कर दी, उस तरह से अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के सामने हम कैसा खेले, तो भई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज़ है। तो अगर आप दोनों को सेपरेट करके देखोगे, तो ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे। ये दोनों को साथ में मिक्स करने की कोशिश करोगे कि भई हम सिर्फ 2-0 से ही हारे, हमने अच्छी फाइट पुट अप की, तो वो आई थिंक थोड़ा-सा ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड हो जाएगा। आई थिंक रिज़ल्ट हमारे लिए पॉज़िटिव है, वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि हमारे लिए जो राउंड ऑफ 16 का रास्ता है, उसको बंद नहीं किया है इस रिज़ल्ट ने। अगर आप 4-0, 5-0 से हारते, तो आपके लिए अगर आप सीरिया के सामने 3 पॉइंट भी लाते, फिर भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता कि आप यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में जा पाते। उस सेंस में ये रिज़ल्ट अच्छा है, बाकी हम ये बात करेंगे कि हमने ये अच्छा कर लिया, तो आई थिंक फर्स्ट हाफ के कुछ मोमेंट्स अच्छे थे, अदर देन हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग किए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो कि दीपक टांगरी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आई थिंक दैट वाज़ अ पॉजिटिव थिंग। अदर देन दैट संदेश चिंगान हैज़ स्टेप्ड अप। बट ओवरऑल डेफिनिटली भाई हमने कल कहा था 50 टू 60 मिनट सब्स्टिट्यूशन ओके भाई। ओके Sandhu coached us a game against Qatar against today he needs to be dropped and I think नील डिसोजा भाई आई थिंक Gurpreet, कीपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोल Gurpreet, रहे हैं वो। हाँ, Gurpreet didn't play against Qatar. It was Amrinder who played against Qatar. अमरिंदर यस अमरिंदर प्लेड दैट गेम। रजनीश भाई उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 5-0 थे था मेरा प्रेडिक्शन तो मैं तो खुश हूँ। अच्छा। पार्थ भाई बोल रहे कि हम लोग 10 साल में क्लब फुटबॉल में इंडियन प्लेयर्स के ऊपर फॉरवर्ड में ट्रस्ट नहीं कर सकते और सोचेंगे हम अच्छा खेलेंगे ये तो फनी हो गया ना। एग्ज़ैक्टली भाई एग्ज़ैक्टली। सही बात है आपकी। मिरर मिल गया इंडिया को। हाँ। नहीं, नहीं आई थिंक वो प्लेयर्स ने भी सुनील छेत्री ने खुद ने बोला था कि दिस इज़ द मैचेस जो आपको आईना दिखाएगा कि भई एग्ज़ैक्टली वेयर वेयर वी आर स्टैंड एंड आगे हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो उस सेंस में भाई ये क्रिटिसिज़्म झेलना कोई वो वाली बात नहीं है और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप उसको नेगेटिव तरीके से मत देखिए कि सेकंड हाफ में वी वर ऑफुल। वी वर ऑफुल हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। हम 60 क्या बोलते हैं कि We have to we थर्ट have to be हाँ, honest also, no? It's not a हाँ, question of saying things, no? When they were playing well, we were saying that. But the reality is, the second half, you were nowhere, and there was no intent also from the coach to try and change things. थिंग्स That is the other point. After it was visible that Nikhil Pujari was struggling. हुँ, What are you doing in that position? You're taking off Shubhashish Bose, and I thought if Shubhashish was injured, ठीक है. हुँ। But if he's not, उज़्बेक इज़ then बेटर I देन would have ऑस्ट्रेलिया। kept. So हुँ। again, I don't know. It's not acceptable. This second 45 is not acceptable. This was not good enough. फॉर मी आल्सो द सब्स्टिट्यूशन डिसीजन वर लिटिल बिट बेटर हो सकते थे। बट ओके बॉयज़ प्लेड वेल तो ब्राज़ील नहीं बन जाएँगे हम पॉज़िटिव हैं। बिल्कुल भाई दिस इज़ अ सक्सेस अब क्या हम 50% पोज़ीशन थोड़ी रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 शॉट्स। इट्स नॉट अबाउट द स्टेट्स भाई हाइब्रिड भाई आई That, थिंक स्टेट्स के exactly. ऊपर That's जाना भी the नहीं other चाहिए। problem. इट्स We what stats हुँ, are deceiving. Your हाँ, stats will show that Suresh shot is going to be, or even that attempt ऑन from टारगेट शॉट Liston Colasio. Those are on target हाँ, shots. हाँ। So बट that वो is मतलब 0 again प्रोबेबिलिटी वाले चांस था कि गोल स्कोर होते वो। हुँ, it in X goals it would not even appear as a goal chance. गोल चांस। हुँ, ऑब्वियसली। That is the thing. The first 15 minutes, 20 minutes, yes. First half, fight. But that second half, what we've been saying for weeks now, when if you can get to a 0-0, 46 to 60th minute, that is going to be crucial. क्रूशियल। And again, बहुत ही ज़बरदस्त। Australia proved today that they're not that good a team. So therefore, okay, let's take this result. Let's see. फोक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल फ़ोकस ऑन उज़्बेक नाउ द लर्निंग्स एंड मूव ऑन फॉरगेट दिस।
बट टूर्नामेंट के हिसाब से आई थिंक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है कि 2-0 से ही आप आ रहे हो। वी ड्रॉप्ड अवर हेड्स आफ्टर द फर्स्ट गोल। ऑन गोल हो जाता, मज़ा आ जाता ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल भाई। हाइब्रिड भाई, बिल्कुल भाई, डिफेंसिवली बट द थिंग इज़ कि हमने मतलब जो हम चीज़ क्या बोलते हैं कि रिपीट करते आ रहे थे कि ये इंडिया लैग कर रही है, वो यहाँ पे भी दिखा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ पे उस चीज़ में वो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। दैट इज़ द ओनली थिंग, बट अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उस सेंस में वो है। आयुष टिकारा, सुहेल, कियान को कितना टाइम लेते हैं, शुभ घोष, विद्यासागर सिंह, जो भी जस्टिन पिंटू वेस्ट किया है जब तक तो अच्छा भाई। वो कंप्लीटली भाई डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्कशन चला जाएगा, इंडियन कोच वर्सेस फॉरेन कोच, ठीक है। Are you're naming players who are not? Do you think these players should be playing Asian Cup? Would any of the players that we mentioned, would they make a difference at the Asian Cup? That's the, we don't want to wake up to realities. And now, of course, you'll say again, individual mistakes. Why are we making individual mistakes? Because we are under pressure. And when you are under pressure for 90 minutes, you will make mistakes. Sadly, it is, right? Gurpreet did a mistake अरे in the सक्सेस first जोन half, भाई, didn't concede. इसका कोई सर्टेन टाइम फ्रेम नहीं होता कि आप इतने साल में सक्सेसफुल हो जाओगे भाई। इट्स ऑल अबाउट द वर्क यू पुट इन द ग्रास रूट एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट अ Partho, we're not wasting the talent. If the talent is really good, they will find he is even a B route or a C route to success. Sunil Chhetri is a success. prime example. Sunil Chhetri was done at 23-24 when he went to JCT. Right? So that is the thing. So therefore, This is the नहीं, that's सॉरी the टू thing. इंटरप्ट सर। दिस इज़ द पॉइंट आई एग्री कि वी नीड टू ब्रिंग, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए अभी, तो ये चीज़ होना पड़ेगा, तभी जाके आप ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने आप टक्कर दे सकते हो। बाकी इस प्लेयरों से आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भई आपने 15 मिनट अच्छा खेला, फर्स्ट हाफ अच्छा खेला, हमने डिफेंड में ये अच्छा किया, हमने ज़्यादा गोल नहीं कंसीड किया। दीज़ आर द थिंग यू ओनली कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम करंट जो हमारे पास ग्रुप ऑफ प्लेयर है। उसमें कोई भी आ जाता है, कोई भी नाम ले लो, वो वाली बात है। अगर इंस्टेंट आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो आपको ये प्लेयर लाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात वो है, एंड आपको उसी के साथ ग्रास रूट में भी काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बट आई थिंक दैट वुड बी टोटली डिफरेंट डिस्कशन। सो आई थिंक सोविक सरकार का भाई सुपर चैट आया है कि अरुणा चौधरी सर यू आर अच्छा भाई, फ्लुएंट इंग्लिश स्टूडेंट गिव यू अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद रियलिटी, व्हाई डोंट यू। और भाई तो उसमें क्या दिक्कत है, इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई? See, the question is not about English. It's a question of I've dealt in Indian football for 25 years. I have a right to say what I think is right or wrong. If you guys want to live in, as I like to say, la la land and believe whatever these people tell you, then please stay in there. Then in 100 years we will not move up. Our football will stay where we are. We और need to एक wake एक up to सिंपल सी those बात, realities. There radical changes are needed in Indian football. Radical changes, starting from grassroots to the top. Otherwise, this नहीं whole नहीं discussion will happen. In 2011, at ये least I had a feeling, we're going somewhere when we were there, when we were playing Australia. The Australians, look at Graham Arnold and these guys, they're making fun of us. They gave us respect in 2011. They're not even taking us seriously. नहीं Is एक चीज है यार, is that what you want? That is what you want? ठीक है, then take it. नहीं नहीं एक 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 चीज मेरे को यार बताओ, आप लोग ये क्रिटिसाइज होने से इतना ज्यादा क्या बोलते कि वो क्यूरियस क्यों हो जाते हो? मतलब जो रियलिटी है उसमें एक्सेप्ट करने में इतना ज्यादा मतलब क्या मतलब आपको दिक्कत आती है? और हर किसी का यार ओपिनियन होता है, तो उसमें आप उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हो, तो उसमें अब आप ये चीजें बोलना आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप किसी के ओपिनियन से एग्री, मे बी सर के ओपिनियन से डिसएग्री हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, तो उसमें वो रियलिटी एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ही क्या है? हमको मतलब सही बोला, ला ला लैंड में जीना है क्या? ऐसे मतलब 2031 में जब एशियन कप खेल रहे होंगे, तभी ऑस्ट्रेलिया के सामने हम यही एक्सपेक्ट करेंगे क्या? तो ठीक है भाई, अब जो गेम हुआ है, वो जो जैसा हमने खेला है, वो बात हो रही है भाई। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। एग्ज़ैक्टली भाई। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बट आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट द फुटबॉल। आप टाइम के साथ अपनी लाइफ में भी सीख जाओ, तो बढ़िया रहेगा, ज़िंदगी अच्छा कटेगा, सिंपल सी बात वो है। क्योंकि इट्स नॉट ओनली एवरी टाइम कि भई जो आप बोल रहे हो वही होगा, और आप जो सोच रहे हो वही होता है, या फिर जो आपने जो सोचा है
वही एक्चुअल में है। सो देयर आर डिफरेंट रियलिटीज़ जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जस्ट फ्यू चेंजेस ऑन पोजीशन, निखिल इज़ डन फॉर मी, नो कैप मैन। ओके, अच्छा भाई आपका भी विनीत भाई निखिल पुजारी, आशीष राय को बुला ले क्या हम? आपके फेवरेट प्लेयर को। ठीक है भाई, जो हो गया वो डिड केपी राहुल प्ले टुडे? नहीं भाई, आई थिंक विक्रम प्रताप सिंह ने आज डेब्यू किया। दैट्स द ओनली यंगस्टर हू गेट अ चांस। लालचुंग को भी मौका नहीं मिला एंड राहुल केपी भी नहीं खेले आज। एक भी ट्रांजिशन पे चांस नहीं बनाया। सेकंड हाफ वी हैव क्रिएटेड 0 चांस राहुल। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हम बैक टू द Yeah, मैच क्योंकि हमने we थोड़ा-सा spoke ऑफ ट्रैक about चले this. गए Yeah. थे हम। We spoke about this at लोग halftime थोड़े that से if नहीं, सॉरी टू yeah. इंटरप्ट, लोग थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि भाई कैसे आप ये बोल रहे हो? तो ठीक है भाई, काम डाउन, कूल डाउन, 2-0 से आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल बताओ भाई, सेकंड हाफ में हमने एक भी चांस नहीं क्रिएट किया है। हाफ चांस Yeah, भी नहीं क्रिएट किया है। we spoke about this. If we don't provide an attacking threat at halftime, we will हुँ, concede हुँ, because the pressure will mount. And that's where in the first 10 minutes we had to make one or two moments at least to sort of say, hey, we're there on the counter. And they would sort of sit back a little more. But there was no threat. So that gives them the license to really just push us and push our limits. And that's what happened. And they got the goal. Yeah. एक चीज़ थोड़ा-सा मैं कंसर्न हूँ कि संदेश चिंगान ने जिस तरह से आज खेला, बेहतरीन खेला, लेकिन थोड़ा-सा उसका Yeah. हेड इंजरी के रिगार्डिंग लेट होप सो, मतलब उतना ज़्यादा कुछ अफेक्टेड ना हो क्योंकि आई थिंक वहाँ से आई थिंक ब्लड भी दिख रहा था। सो वी नीड हिम इन दी ऑल दी 3 मैचेस इफ वी आर एमिंग कि हम क्या बोलते हैं कि राउंड ऑफ 16 देख रहे हैं या फिर सीरिया के सामने भी मैच निकले, क्योंकि आज आई थिंक अरुणा सर, संदेश चिंगान अगेन शोड कि व्हाई ही इज़ अवर बेस्ट डिफेंडर। Huh. Because Sandesh plays with heart and plays with mentality. हुँ, That हुँ। is what was needed. And the one thing you have to put in, if you are inferior to an opponent, you have to put in your heart, your soul, everything. And the problem is, देखो स नहीं, we एक need सेकंड। to. नहीं, नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई शोविक भाई, किसी को आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको रखने का एक तरीका होता है। सो आप उसको बेटर तरीके से रख सकते हो भाई, उसमें आपकी जो लैंग्वेज है, वो बेटर यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को उस तरह से क्या बोलते हैं कि ऑफेंड करके आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। दैट इज़ द सिंपल थिंग, बाकी आप अपना ओपिनियन रखिए, हमें कोई फ़र्क वो क्या बोलते हैं कि दिक्कत नहीं है। आप भी रखिए अपना ओपिनियन, हम भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, सिंपल सी बात वो है। बट ज ओनली थिंग इज़ कि आप सामने वाले का ओपिनियन को रिस्पेक्ट ना करें तो नहीं, ना सही, लेकिन एट लीस्ट एक एक सही सही तरीके से उसको आप क्या बोलते हैं कि अ एक अप्रोच करना चाहिए। सिंपल सी बात वो है कि आप उसको उस तरह से रखिए भाई, बाकी कोई चीज़ नहीं है, बाकी हर किसी का भाई अपना-अपना ओपिनियन होता है। जी सर, कंटिन्यू। No, for us, it's we don't play strong Asian opponents, and that is one of our problems. That when we are playing friendlies or playing tournaments, we are playing teams of a B of a C grade, or teams who are even worse than us. We're not playing. When was the last time we played Japan? When was the last time we played South Korea? When was the last time we played Iran or a Saudi? Only in हुँ, official qualifiers, हुँ, right? And the point here is, even Australia is not amongst the best in Asia. Even if they would go on to win the Asian Cup, to me, they will not be at the same level of whether I feel that a Japan or a Korea, to some extent, Iran and the Saudis have. Even the हुँ, Qataris are not there. So therefore, we need to realize where we do, and we need to work on what needs to be done. Someone asked, just criticism? No, it's not just about criticism. I don't need to tell on a public platform on what solutions I've given over the years to Indian football and what the AFF has taken or rather not taken over the years. So I know what I've done over the last 25 years. I'm not someone who's blowing my trumpet and saying, bhai, ye kiya, wo kiya. No, I don't need to do that. I know what I've done. And I think I'm in a position to be allowed to make that criticism. And the point here is, this is pointed criticism. This is not criticism for the sake of criticism. It is pointed criticism. हाँ, And this result
should be a clear-cut indication to everyone involved in Indian football, every stakeholder in Indian football. Everyone needs to work harder to make us a better football nation. Because otherwise we're just dreaming. And that is something... नहीं सर, ओसीआई के बारे में भाई देखिए, वो तो हम सबको पता है। ओसीआई नीड्स टू बी, आई थिंक इंस्टेंट रिजल्ट आपको चाहिए, देन दैट इज़ द ओनली वे, बाकी कोई रास्ता है नहीं। आई गेट अरुण सर's point about not playing with a stronger opponent but is that issue with the AFF or do the team not want to play with us? देखिए, ये सुनील सर ने भी बिफोर द एशियन कप अभी कपल ऑफ डेज़ बैक ही उन्होंने मेंशन किया है कि अब से हमें सिर्फ हायर ओपोनेंट के सामने ही खेलना चाहिए, एंड दैट इज़ द राइट पॉइंट विथआउट अ डाउट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके सामने खेलोगे, आपको अपने क्या बोलते हैं कि ड्रॉबैक्स पता चलेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो एक आई थिंक एटलीस्ट मेरे मेरे हिसाब से जो एक एक चीज़ होगी कि एक आप क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई फ्रेंडली आप खेल रहे सऊदी के सामने, वहाँ पे आपने गलतियाँ की, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अब, क्योंकि फैन्स भी देखेंगे कि हाँ भाई, अभी काफ़ी सारे फैन्स ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे ओपोनेंट के सामने खेलते आ रहे हैं कि वहाँ तो अच्छे कर रहे थे, फिर सडनली यहाँ पे हमारे प्लेयर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं। सो वो हम क्रिटिसाइज़ करते तो वो बोलते हैं कि भाई इतने भी अच्छे हमारे प्लेयर इतने भी बुरे नहीं है। बट एक्चुअली में वो लेवल के है ही नहीं, तो एक्सेप्ट करने में वो दिक्कत आती है। सो आई थिंक रेगुलरली अगर आप हायर ओपोनेंट के सामने खेलोगे, तो लोगों को भी पता चलेगा, फैन्स को भी, कि हाँ भाई एग्ज़ैक्टली हमें कहाँ पे पहुँचना है और क्या-क्या हम लैग कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग क्या काम हो रहा है। वो एएफएफ और उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। So definitely. And What do you the say point about? is not India. It's not only about India. Uh, It's also about... I go back to Mumbai City playing against Navbahar and Al Hilal. We nope. saw that in the Champions League. Even our top teams with foreigners are far, far away from the best in Asia. But again, if we expect wonders from OCIs, that tomorrow 3 OCIs or 5 OCIs will come and India will become a top 5 nation in Asia, that won't also happen. It'll take time for the players to settle in and help. And the point is, it's only doing something at the top will not do. The ISL is a proof of that. You've improved a lot of things. But one thing which has not improved over the last 10 years is the football on the field. Everything else has improved. Infrastructure has improved. Stadiums has improved. Your television coverage has improved. Even your marketing has improved. But on the field, that's the most important thing. We can talk about everything that's happening. Everything is a nice show. But on the field, we have to deliver. And there we are not in a position to deliver. These boys are trying their best. They're giving their best. But their best is not good enough to compete with the best in Asia. That is the brutal reality and brutal truth of these things. And this is something that we need to talk about this. एक चीज़ मैंने जो अभी स्टार्टिंग में भी आफ्टर द मैच क्लियर की थी, फिर से मैं कर देता हूँ। लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, मैं बता देता हूँ आपको कि आप दोनों चीज़ों को सेपरेट रखो। रिज़ल्ट आपका एशियन कप के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, दैट्स द राउंड ऑफ 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट्स द पॉजिटिव रिज़ल्ट। बट अगर आप गेम प्ले को उसके साथ मिक्स करोगे कि हमने अच्छा खेल के ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 2-0 से हारे, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ। सिंपल सी बात वो है, आप गेम प्लान और जिस तरह से हम खेले उसको डिफरेंटली आप क्या बोलते हैं कि जज करो या फिर देखो, एंड रिज़ल्ट को डिफरेंटली देखो भाई। दीज़ आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग। अगर हम देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने सिर्फ 2-0 से हारे, तो वो आपको पता है कि हमने कैसा खेला है। तो आई थिंक वो अपने आप से ही आप वो क्या बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हो, वो वाली बात है। तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप गेम को एनालाइज़ कर रहे हो, तो टोटली 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करो। एक तो रिज़ल्ट के ओरिएंटेड से कि आप सिर्फ 2-0 से हारे, आपके लिए पॉजिटिव ये है कि आप सीरिया के सामने और आपका जीडी है, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल सकती अफ़ेक्ट आपको नहीं करेगा। एंड दूसरी साइड है आपका गेम प्ले कैसा था। वी प्लेड फर्स्ट हाफ रियली वेल, डिफेंड हमने अच्छा किया, ये सही बात है आपकी, नो डाउट अबाउट दैट। बट सेकंड हाफ में हम उतने ही ऑफुल भी थे, तो ये भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हम फर्स्ट हाफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर ने काफ़ी बेहतरीन खेला, तो सेकंड हाफ में हमें फिर दिक्कत क्या आ रही है कि भाई हमारे प्लेयर उस लेवल के नहीं है कि पूरा 90 मिनट वो नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात वो है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गेम प्ले नहीं चाहिए, रिज़ल्ट होना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि गेम प्ले भी ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखो, तो उस सेंस में वो गेम प्ले बोल रहे हैं। और रिज़ल्ट आपका अभी आप ओनली क्या बोलते हैं कि एशियन कप के हिसाब से देखो, तो सिर्फ रिज़ल्ट मैटर करता है। सो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, इसको जितना ज़्यादा आप जल्दी आप समझ पाओगे, उतना बेटर होगा। व्हाट डू यू से राहुल अबाउट दिस एंड देन वी विल रैप अप बिकॉज़ 9 बजे को हम थोड़ा-सा लोग भी अभी थोड़े से क्या है कि हाइपर इमोशन के साथ हैं, हम भी थोड़े से कूल डाउन हो जाएँगे एंड 9 बजे के बाद थोड़ा-सा बेटर वे में हम इसको जज कर पाएँगे। बट what's your final thought on this match, and then we will wrap up. No, I think you're right, Hiren. I think there is a bit of emotion. Of course, it's you're watching your nation play, and being the underdogs, there's always a lot of emotion involved. And yeah, even I think I am emotional right now. Just want to
sort of take that hour, 1.5 hours, sit down and have a clear-headed conversation about it. But I think, look, like Arnava said, there is a certain quality limit that India has. We can't go Hmm. beyond that. Hmm. They played to the extent that they could. Like we defended really hard in that first Hmm. half, and that's sort of the limit that we have. Because if you want to relieve pressure, you have to try to play some football, which we were not able to, unfortunately. And yeah, that's Hmm. that. But yeah, I'm proud of the boys for the effort. So it's Hmm. just yeah. But again, in the second half, नहीं, it wasn't good enough. So yeah. उसमें देखिए, उसमें तो प्लेयर को हम 100% मार्क देंगे। एफर्ट के मामले में ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लेयरों ने एफर्ट नहीं डाली। वो तो सेकंड हाफ में मैं बोलूँगा कि उनकी ओर से जितना उसकी एबिलिटी है, उस हिसाब से वो खेले। अब वो एबिलिटी नहीं है आपकी कि आप पूरा 90 मिनट इस इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हो। तो वो तो एक्सपेक्टेशन रखना वो गलत चीज़ है। तो वो वाली चीज़ है। तो उसमें आई थिंक प्लेयरों को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने एफर्ट ज़रूर डाले। एंड एक चीज़ लास्ट में मैं बोल देता हूँ गाइज़ कि यहाँ पे आपके ओपिनियंस भी वेलकम है, हमारे भी है। एंड ऐसा नहीं है कि भई कोई हमारे से अगेंस्ट बोल रहा है तो उससे वो गुस्सा है। भाई ये प्लेटफ़ॉर्म ही हमने इसलिए यहाँ पे डिस्कस ही इसलिए करते हैं कि आप सब भी हमारे भाई लोग ही हो, तो उसी के साथ डिस्कस करने में मज़ा आता है। सो हर कोई का अपना ओपिनियन होता है, उसको ज़्यादा मतलब दिल पे नहीं लेने का कि भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो ऐसे कोई बात नहीं होती। हम सब यहाँ पे एक ही चीज़ चाहते हैं। अल्टीमेट एम इज़ द इंडियन फुटबॉल्स बेटरमेंट, सिंपल एज़ दैट। हर कोई का अलग-अलग पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो वही वाली बात है। एंड उसी नोट के साथ हम इसको रैप अप करते हैं। एंड रात को 9 बजे फिर से हम मिलेंगे टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। एंड वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वहाँ पे और ज़्यादा आपके भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी लेंगे। एंड वहाँ पे 1-2 और गेस्ट को बुलाने की कोशिश है हमारी। अगर वो आते हैं तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं रात को 9 बजे। प्लीज़ डू चेक आउट टू स्पोर्ट खबरी एंड अरुण फुट ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल द चैनल्स। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।